तो फेस पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा, दो हो सकता है ना। वॉल्यूम बढ़ाओ, ठीक है, और पर्दा लगा दे जिससे कि तुम्हारा क्लियर फेस आए। नहीं सही नहीं, अब तो काला दिख रहा है, देख लीजिए काला दिख रहा है। नहीं, काला नहीं दिख रहा है, सही दिख रहा है। Hey everyone, could you please turn on your cameras? Roshni, Ananya, Anvika, Astha. छोटी दी का कॉन्टेक्ट नंबर देना देना। छोटी छोटी छोटी। Still 3 people haven't joined the meeting. छोटी 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 छोटी। Anvika, Astha, Ananya, could you turn on your cameras, please? Okay. There is. Am I clear and audible? Okay. So I think we would start. People will join at their time. Hello everyone. Welcome to the science workshop. You guys have read the brochure, I believe. Have you? Make it interactive, please speak. Yes, दीदी। You guys have, okay, cool. So हम लोग first half में beginning through the end करने वाले हैं, but उससे पहले let us introduce ourselves, all of you guys, to each other. Make it interactive. मगर you guys know everything about the brochure in detail, right? So there are going to be 2 events every day. 45 minutes each. We'll give a 15 minutes break in between after completion of the first event. First discussion rather. Second half हमेशा ज़्यादा interactive रहेगा. I want all of you guys to open your mics and cameras. Questions पूछो, मत सोचो. Make it worth it. Deep discussion होगा. छोटे से छोटा question पूछो. ये मत सोचो और लोग क्या सोचेंगे, because this is a subject जिसमें लोग सबसे ज़्यादा कतराते हैं पूछने से, because they think that they are not understanding something, but they have different perspectives about a different topic. क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है. अगर बोलने में दिक्कत हो रही है, चैट बॉक्स में पूछो, आंसर मिलेगा. ऑलराइट. बीच में अगर पूछना है तो एक बार बोल देना, अदरवाइज मैं पूछती रहूँगी अगर कोई क्वेश्चन हो हर टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बाद. अगर दिमाग में ज़्यादा देर स्टिक कर रहा है तो नोट कर लो, बट पूछो. कुछ लोगों को ओके, समवन इज हियर. Someone asked for a recording, तो ये meeting record होगी पूरी. If you guys also want a recording of this meeting, tell me, message me on WhatsApp. Apart from the 10 of you who have joined this event like this, there's one school which has joined along with us through another device. It is an underprivileged school, so we are not taking any amount from them. It is from Maharashtra, I believe, the army school there. So we have 500 other participants along with you guys. They are also going to ask questions, so if I look there, don't think that I'm mad. I'm just interactive with them as well. Okay, so I want all of you guys to first of all open your cameras and mics if possible. Introduce yourself one by one. We'll start with the list here. Just give me a second. Okay, so first in the meeting is Astha Verma. Astha, could you just introduce yourself, brief yourself? Good afternoon. Good afternoon. I am Astha and I'm an 8th class student. Okay, great. Ananya Mishra. Good afternoon. I'm Ananya and I'm in 9th class and I live in Lucknow. Okay. Cool. Anvika. Good afternoon, Dee. Good afternoon. I'm Anvika and I'm in class 7th. Okay. Atharva. I am Athar. I am in class 3rd. Okay. After that, Ilma. Good afternoon.
My name is Ilma. I am in class 9th. Okay. Niharika. Good afternoon. My name is Niharika and I'm in class 9th. Cool. Siona. My name is Yona Shri and I am in class 7th. Okay. Roshni. Roshni, can you hear me? Hi everyone. Am I audible? Yes, you are. Hi everyone. I am Roshni and I am from class 9th. Okay, cool. So now I'll quickly brief myself too. So, hi everyone, I am Shruti. I am an enthusiast for astrophysics. I love the subject. I am an author. I have published 3 books. You can find them on Amazon if you want to. Okay, someone is here. Then I have a special place for animals in my heart. That is why I run an organization called Hands for Charity. I just returned from Chicago after completion of my immersion program there at the University of Chicago. It was a lovely experience. I'll share about that and everything. How can you guys go there? I got a scholarship of $6,000. So everything related to that will be discussed tomorrow. I am being awarded the Pradhan Mantri Bal Shakti Puraskar for the small things that I have done so far this Republic Day, this Republic Week actually. So, yep, that's pretty much me. I have a very special place for the cosmos in my heart and I wanted to share in depth with you guys. You guys won't regret it for sure. मोड ऑफ कम्युनिकेशन फिर से हिंदी और इंग्लिश रहेगा. हिंदी में भी कुछ पूछना है मत कतराना, पूछ लेना, डाउट्स हमेशा क्लियर होने चाहिए. ओके, आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट इज़ डन, तुम लोगों का एक क्विज काइंड ऑफ भी होगा या कुछ फन टाइप का भी होगा. इन उसमें आई वांट एवरीवन टू ओपन देयर माइक्स एंड एवरीवन टू इंटरैक्ट. सबका ओपिनियन चाहिए. जो समझाया है उसी में से होगा, बट हाँ थोड़ा पर्सपेक्टिव ज़रूर तुम लोगों का लगेगा उसमें. ऑलराइट, अभी तक कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस? कुछ नहीं. ओके, सो वी विल क्विकली स्टार्ट. The first half is gonna be about from the beginning to the end. I just hope कि सबने वो पढ़ा हो. क्या कहते हैं, that thing we shared brochure, सबने पढ़ा है? ऐसा कोई नहीं है जो ऐसे आ गया हो तो बता दो, शर्माओ नहीं. ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग थ्रू द एंड. सो सबको पता है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, नाम सबने सुना है, थ्योरी नहीं पता, बट बिग बैंग हुआ था इतना पता है. 8th क्लास में था, फर्स्ट लाइन फर्स्ट चैप्टर की कहीं सुना है नाम सबने? Yes, दीदी. हाँ, तो दैट इज़ वन ऑफ द आई थिंक 23,000 theories about the origin of the universe. और उसका अडॉप्शन क्यों किया गया, सबने बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना है, सबको काफ़ी थ्योरीज के नाम भी पता है जिन्होंने डेवलप की वो थ्योरी, बट किसी को बिग बैंग थ्योरी किसने डेवलप की पता ही नहीं रहता, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग नेम, very very confusing name. I'll try to pronounce it afterwards. Right now, I want you guys to share your perspectives about what do you think about the origin of the universe. How do you think it all started? Make your imagination move. Don't rely upon any theory. अभी मैं एक बार अभी पूछ रही हूँ, एक बार लास्ट में भी पूछूंगी about your perspective about it. So if anyone wants to share anything, and I want everyone to do that, please open your mics and tell us about it. Anyone, anything. अभी ऐसे ही पूछ रही हूँ, फिर नाम लेने लगूंगी. Someone, something. रोशनी, सियोना, इल्मा, अनविका, अनन्या, कुछ भी, जो भी पढ़ा सुना कहीं भी देखा हो. अथर्वा, anyone can share anything, yaar. Okay, we'll ask this question in the end then. Abhi, I'll show you guys a video, a short video about everything.
वी आर गोना डिस्कस 3 theories broadly, बट एक बोनस थियरी भी रहेगी लास्ट में, विच इज़ द मोस्ट मैग्निफिसेंट वन आई मस्ट से, एंड बहुत कंफ्यूजिंग है वो. So astrophysics, I love to make it as confusing as possible, but then clearing out stuff. All right. So I'm gonna play a small video about the universe. जिसने कुछ कहा सुना ना हो यूनिवर्स के बारे में, पढ़ा ना हो एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, या एस्ट्रोनॉमी में इतना इंटरेस्ट ना हो. सो अ स्मॉल वीडियो, अ 20-second थिंग, वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. Now, all of you know that we are a part of the earth, but the earth is somewhere a dirt in this universe. Afterwards, I'll talk about multiverse as well. First of all, please tell me if I'm clearly visible and audible and you were able to see the video. Give me a thumbs Yes, up. please. Okay, cool. Yes. So, we are like dirt in the universe, as small as anything, but it is said that human race is the only intelligent race throughout the universe. मतलब अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो हम उसको implementation वो खाली human race करती है. But somewhere it is us being too proud of ourselves कि हम लोग सिर्फ अपने आप को ऐसा consider कर रहे हैं जो कि कुछ कर सकता है या कुछ सोच सकता है. There might be more intelligent beings who gave rise to us. Like we create robots, हम लोग robots बनाते हैं और उनसे काम करवाते हैं. We might be robots to someone too, working on their orders, working on the exploration of the universe, of the part of the universe that they are not able to. So there are n number of theories, but they all you see इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह when it comes to the human race, because चाहे जितना भी एक्सप्लोरेशन कर लें थ्रू आउट आई थिंक सिंस दी पास्ट 300 to 400 years, साइंस ने बहुत कुछ किया है, बट स्टिल वी हैवंट बीन एबल टू फाइंड दैट वन अदर लाइफ फॉर्म जो कि एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमंस हो. राइट? कभी सुना है कि मार्स पे गए और फिर कोई एलियन की खोज हो गई? कभी नहीं सुना. हाँ, मून पे फ्लावर निकला था, बट फ्लावर वुडंट बी एन एलियन, विल इट? या इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ, आई एग्रीड, बट वो भी ह्यूमंस ने ही लगाया था वो सीड, तभी वो वहाँ से निकला था. 1969 में व्हेन वी लैंडेड ऑन द मून, वी प्लांटेड दैट सीड जो कि 2014 में खिला था. जब ये 2014 में जब ये न्यूज़ आई थी तो साइंटिस्ट ने ये बोला था कि वहाँ की ग्रेविटी इतनी कम है जिसकी वजह से खिलने में देर हो गई. बट आई थिंक दैट्स फ्यूटाइल, क्योंकि अगर ग्रेविटी कम है तो किसी भी चीज़ को ऊपर आने में कम टाइम लगना चाहिए. ज़्यादा टाइम कैसे लगा? नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट एज ऑफ येट. बट इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ह्यूमन रेस के अलावा अभी तक हमने कोई नहीं खोजी है. इनफैक्ट ऑन द अर्थ, आई डोंट नो, देर आर 10⁶ species on the earth as well, but none of them can think the way humans do, because हम लोगों के अंदर एक क्षमता होती है पूछने की, why does this thing exist? और सारी जो भी स्पीसीज़ हैं वो वाई पे नहीं रिलाई करती, वो बस चलती जाती हैं. राइट? उनके लिए कुछ काम हो रहा है, सो दे विल वर्क थ्रू इट, बट दे वोंट थिंक कि वो चीज़ क्यों हो रही है. बट ह्यूमन्स के पास क्यूरियोसिटी होती है. दे वॉन्ट टू नो थिंग्स, दे वॉन्ट टू बिल्ड थिंग्स दे डोंट नो. ऑल राइट, सो दैट इज़ वॉट इंटेलिजेंट लाइफ इज़, और वो अभी तक हम लोग ह्यूमन रेस के अलावा और कुछ नहीं खोज कर पाए हैं. बट कंसिडरिंग दैट अर्थ इज़ अ स्मॉल डर्ट, और हमारे सोलार सिस्टम जैसे, हमारे सोलार सिस्टम में 8 planets है, राइट? सबको पता है 8 planets और एक सन है. बट ऐसे ही सोलार सिस्टम की तरह कितने सारे प्लानिटरी सिस्टम्स थ्रू आउट द यूनिवर्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, और जिनके बारे में हमें पता है हम लोग उससे तो लाइफ नहीं निकाल पाए हैं. बट देर आर अराउंड 10⁶ million galaxies throughout our universe itself. So there comes a planetary system. पहले तो planets होते हैं, planet से planetary systems होते हैं, planetary systems से galaxies बनती हैं. राइट? हम लोग कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? Someone will tell us.
मिल्की वे. या सो वी आर अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे. हमसे सबसे ज़्यादा नेबरिंग गैलेक्सी एंड्रोमेडा है. बट क्या वहीं पे चीज़ें कन्फाइन हो जाती हैं? दिस इज दिस थ्योरी कॉल्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स. मतलब मल्टीपल यूनिवर्सेस, one planet, n number of planetary systems, n number of galaxies, n number of universes, and still if we think कि खाली human life ही intelligent है, so we are of course considering ourselves, we are too proud of ourselves basically, right? So ये था starting का brief. Now we'll go on to the theories whichever we want to discuss. Different theories. तो canva से बनाई है PDF, so दिख गया होगा this presentation. They always want to advertise themselves. पहली बात हम लोग बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे. The most basic theory. It was given by Georges Lemaitre, if that is how you pronounce it. He was a Dutch scientist, so that is how you pronounce it. Belgian basically, but yeah, he spoke Dutch. तो ये थ्योरी जब आई थी तब चर्च का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था हमारी ह्यूमन रेस पे. कितनों ने यहाँ पे रेनेसा पीरियड के बारे में सुना है? रेनेसा जो भी सुना है सबने? Yes. स्कूल में पढ़ा है. सो उसी में एक्सप्लेनेशन था बेसिकली कि चर्च कितना डोमिनेंट था ओवर एनी अदर सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस टुवर्ड्स एनीथिंग. मतलब चर्च अगर कुछ बोल दे, सो दैट हैज़ टू बी फॉलोड इन दैट पीरियड, राइट? दैट इज़ व्हाट रेनेसा वाज, टू ब्रीफ इट, राइट? Yes, Didi. सो जब ये थ्योरी आई थी तो उसी समय गैलीली ने भी अपनी थ्योरी दी थी अबाउट ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. फर्स्ट लेट मी ब्रीफ बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ब्लैंक स्पेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है? इट डज़ नॉट से कहाँ प्रेजेंट है, बस प्रेजेंट है. उसमें एक पॉइंट साइज्ड पार्टिकल प्रेजेंट है. पॉइंट साइज मतलब समझ रहे हो, तुम लोग ने पेन लिया, पेन की टिप एक बना दी. दैट इज़ हाउ बिग दैट पार्टिकल वाज. ओके, उस पार्टिकल के अंदर हमारा पूरा प्रेजेंट यूनिवर्स ऑलरेडी है. मतलब ऑल दोज थिंग्स दैट यू नो राइट नाउ आर ऑलरेडी देयर इन दैट पार्टिकल. और जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपनी खुद की ग्रेविटी के अंदर फॉल कर जाता है और बैंग क्रिएट होके हमारा यूनिवर्स बनता है. सो दिस इज़ अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन. ये एक पार्टिकल था बीच में जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि वो अपनी खुद की ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स कर गया. कोलैप्स मतलब समझे, गिर गया, अपनी खुद की ग्रेविटी के अंदर गिर गया और वो ऐसे फटा, ऐसा बैंग हुआ कि हमारे पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो गया. बट जब ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ था तो इनिशियली इट वाज नॉट लाइक गैलेक्सीज क्रिएट हो गई, प्लैनेट्स क्रिएट हो गए. नो, द फर्स्ट टू गैसेस विच वर बॉर्न, द फर्स्ट टू गैसेस जो कि क्रिएट हुई थी वो हाइड्रोजन और हीलियम थी, जो कि पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट टू गैसेस हैं, लाइटेस्ट गैसेस हैं. आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड, बट या जस्ट फोकस हियर. इफ कैन यू हियर एनीथिंग मच, बिकॉज आई कैन. No. Okay. No, Didi. Okay, all right. So these two sorry. Yes. Okay, you can hear Dandan. Yes. थोड़ी बहुत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. So there were these two gases, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो कि स्टार्टिंग में थी. बट अराउंड after 10 million years light entered the universe. जो लाइट जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है हमारे यूनिवर्स में 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. आई होप मैक्सिमम लोगों ने इसकी स्पीड सुनी हो. सो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हाइड्रोजन और हीलियम के आपस में रिएक्ट करने की वजह से आई. यू नो अबाउट फ्रिक्शन, व्हेनेवर यू रब योर हैंड्स हीट फील होती है, गर्मी लगती है. तो ये उन्हीं दो गैसेस के आपस के फ्रिक्शन और आपस के कोलिजन्स की वजह से हुआ था कि लाइट एनर्जी के फॉर्म में निकली. हमारी जब हम लोग ये रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी क्रिएट होती है. बट जब ये गैस पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट किए तो लाइट एनर्जी क्रिएट हुई. और ये पहली बार था जब हमारे यूनिवर्स को अगर कोई ऑब्जर्वर होता बाहर तो कोई देख पाता. अदरवाइज इट वॉज जस्ट दीज टू गैसेस. अभी तक कुछ डाउट्स?
कैसे No, भी Didi. छोटे कहाँ निहारिका के कोई नहीं है और किसी के No, Didi. नो अभी No. तक कुछ समझ में आया Yes, Yes. Didi. कि सब ऊपर से गया? कुछ ऊपर से तो नहीं गया? नो दीदी नो राइट? No, ठीक Didi. है, बहुत बेसिक फॉर्म में समझा रही हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट अभी नहीं बताऊंगी, कैलकुलेशन पार्ट वुड बी टू मच फॉर यू गाइज बिकॉज यू गाइज नीड टू टेक अ कोर्स फॉर इट। मे बी वेन एवर आई डू अ मोर डिस्क्रिप्टिव कोर्स उसकी कैलकुलेशंस भी बताऊंगी सो दैट यू गाइज कैन फ्लेक्स इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। पार्शली क्योंकि अगर तुम लोगों को इन वेरिएबल्स का मतलब समझ आ जाए तो वो कैलकुलेशंस भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि जब ये कैलकुलेशंस हुई थी तब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं आई थी, ठीक है। तो अभी तो थियोरी समझते हैं हम लोग थे। लाइट आई हमारे यूनिवर्स में, राइट। तो फिर अगर कोई पूछे कि पहली दो गैसेस कौन सी थी या बेसिक गैसेस कौन सी हैं, सो द आंसर इज़ ऑलवेज हाइड्रोजन एंड हीलियम। उन्हीं के फॉलो अप करते हुए जब उनके एटॉमिक मासेस बढ़ते गए, एटॉमिक नंबर्स बढ़ते गए, उसके बाद और सारी गैसेस आई। बट स्टिल हमारे यूनिवर्स में जो मेजॉरिटी गैसेस हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम ही हैं। तो जब ये हाइड्रोजन और हीलियम और लाइट आ गई तो सबसे ज़्यादा बेसिक एंटिटीज़ जो कि क्रिएट होना शुरू हुई वो हुई स्टार्स। सबको पता है क्या होते हैं। हमारे सोलार सिस्टम के सेंटर में जो सन है वो भी एक स्टार है। ऐसे ही करके हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं। हमारा सन एक बहुत छोटा स्टार है। आई ट्राई एंड ब्रीफ अबाउट ब्लैक होल्स टू यू गाइज टू इफ़ वी गेट टाइम, बगर आई थिंक वी आर रनिंग अ लिटिल लेट, बट आई ट्राई, ठीक है। सो दी स्टार्स वर फॉर्म्ड जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट किए, हाइड्रोजन एंड हीलियम। किसी भी स्टार में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं। रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है किसी ने, बेसिक भी पढ़ी हो तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पता होगा। सबको न्यूक्लियस के बारे में पता है? ओके। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बेसिक न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस नहीं एटम दिखता है, बट लेट अस टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। तो ये जब दो न्यूक्लियसेस अपने आपस में आके मर्ज हो जाते हैं देन वी कॉल इट न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब ये मर्ज नहीं होते हैं, दूर जाते हैं, देन वी कॉल इट न्यूक्लियर फिजन, ऑलराइट। तो इन्हीं दो रिएक्शन से स्टार्स का सिस्टम चलता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन जो कि हर सेकेंड में n नंबर ऑफ टाइम्स होता है, लाइट एनर्जी क्रिएट होती है। लाइट एनर्जी के साथ ही हीट एनर्जी भी क्रिएट होती है। एक चीज़ का नाम सुना होगा, डेसिपिएटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर नहीं सुना है तो अब सुन लो। डेसिपिएटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो कि उस काम में इन्वॉल्व नहीं है बट वो रिलीज़ हो रही है एज अ वेस्ट। जैसे कि ट्यूबलाइट जल रही होती है, ट्यूबलाइट का मेन काम है लाइट देना, बट ट्यूबलाइट उसी टाइम पे पैरेलली गर्म भी हो रही होती है, तो वो जो हीट होती है वो डिसिपिएटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जो स्टार का मेन एनर्जी फॉर्म होना चाहिए दैट इज़ लाइट एनर्जी, बट बिकॉज ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन हर टाइम पे, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बाय दैट आई मीन, तो उससे लाइट एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी निकलती है। सन इज़ द मेजर सोर्स और द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, not just for the earth but for any planet. Yeah, you guys know that. किसी भी प्लानिटरी सिस्टम का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा उसके सेंटर में जो स्टार होगा वो होगा। ये जो भी हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जीज अभी चल रही है हमारे आसपास वो सिर्फ और सिर्फ सन की वजह से चल रही हैं, ठीक है। अगर सन नहीं होता तो कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होती, इनफैक्ट प्लैनेट्स भी नहीं होते। तो जब ये बॉल ऑफ डर्ट्स, जब ये स्टार्स बनने लगे तो उनके साथ ही वो हीट और लाइट एनर्जी के साथ ही डस्ट पार्टिकल्स भी रिलीज़ करने लगे। तो ये जो प्लैनेट्स हमें दिखते हैं या जो भी हमारे हैं ऑलरेडी सोलार सिस्टम में, अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम्स में, दे आर जस्ट बॉल ऑफ डर्ट। ये न्यूक्लियर फिजन और लाइट की वजह से एक बहुत बड़ी चीज़ आई हमारे यूनिवर्स में जिसकी वजह से अभी हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है, ग्रेविटी। Aradhana Rao, Dundan, have you any problem? Do you have any problem? No. Okay, you raise your hand. Don't raise your hand if you don't have any problem, okay? तो जब ये gravity आई, then this gravity started to attract all these ball of dirts revolving throughout the universe.
जो सन की जो ग्रेविटी है उसने अट्रैक्ट किया जो भी डर्ट्स थी अपने आसपास और उनको एक शेप दिया। किसी भी प्लैनेट का शेप प्रॉपर सर्कल प्रॉपर एलिप्स कुछ नहीं होता, इधर उधर उखड़ा उखड़ा रहता है। दैट इज़ जस्ट बिकॉज बॉल ऑफ डर्ट है, ग्रेविटी की वजह से स्टेबल है। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर उसने अट्रैक्ट किया तो वो मोमेंटरीली क्यों नहीं अट्रैक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ द सन, देन अगर अट्रैक्ट किया तो हमें ऐसे आके ऐसे निकल जाना चाहिए था, कोई भी बॉल ऑफ डर्ट होती। बट बिकॉज उसकी ग्रेविटी चारों तरफ से लग रही है, दैट इज़ वाई वी गॉट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉर एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड। अच्छा, ये पता है कि 8 प्लैनेट्स सिर्फ नहीं रिवॉल्व करते हैं हमारे सन के आसपास। 8 प्लैनेट्स बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे मॉडल में फिट कर रहे थे। सोलार सिस्टम के मॉडल में 8 प्लैनेट्स फिट कर रहे थे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इफ़ यू सी अ डिटेल्ड पिक्चर। इनफैक्ट जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में पता है, मार्स और जुपिटर के बीच में है सबसे बड़ी एस्टेरॉइड बेल्ट हमारे सोलार सिस्टम की। उसमें जो एस्टेरॉइड्स हैं उसमें से खुद कुछ एस्टेरॉइड्स प्लैनेट्स के लिए वो कर रहे थे, क्वालिफाई कर रहे थे 1-2 कंडीशंस को। सो देर आर 3 कंडीशंस दैट नीड टू बी फॉलोड फॉर एनी बॉल ऑफ डर्ट टू बी कॉल्ड अ प्लैनेट। उसमें से कुछ 2 को फॉलो कर रहे थे, कुछ 1 को फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से हमने उसे डिस्कार्ड कर दिया। बट देर आर स्टिल थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स और पार्टिकल्स तो मिलियंस लगा लो, रिवॉल्विंग अराउंड दी सन। बट हमें मॉडल में फिट करने के लिए हमने 8 कंसिडर करे। सो द 3 कंडीशंस फॉर एनी बॉल ऑफ डर्ट टू बी कॉल्ड अ प्लैनेट इज़, पहला उसका खुद का मास होना चाहिए, दूसरा वो सन के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, जो भी सेंटर में स्टार है उसकी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस उस पर होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिर वो उस प्लानिटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। तीसरा, वो किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर उसने छेड़छाड़ की, जो कि प्लूटो कर रहा था, तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। इसीलिए प्लूटो को डिस्कार्ड किया गया क्योंकि वो बार बार नेपट्यून के ऑर्बिट में घुस रहा था, राइट। तो ये तो सोलार सिस्टम में आ गए हम लोग। तो ये ऐसे सोलार सिस्टम, ऐसे स्टार्स से फिर प्लैनेट्स बने। सो दिस इज़ व्हाट द बिग बैंग थियरी इज़। इट बेसिकली स्टेट्स कि एक पॉइंट साइज पार्टिकल था, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर गया। जो फर्स्ट 2 गैसेज आई उस आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्शन वर हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम के आपस में अलग अलग रिएक्शंस की वजह से, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से लाइट एनर्जी आई, राइट। उस लाइट एनर्जी के बाद और रिएक्शंस होने लगे, फिर स्टार्स आए, स्टार्स के बाद इवेंचुअली प्लैनेट्स आए और ये प्लानिटरी सिस्टम्स बनाने लगे। इन प्लानिटरी सिस्टम्स ने मिलके गैलेक्सीज बनाई और उसके बाद मल्टीपल गैलेक्सीज बनी। तो ये थियोरी सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्स के बारे में बात करती है। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस थियोरी इज़ कि वो जो पॉइंट साइज्ड पार्टिकल था वो कहीं तो था, वो कहाँ था, वो स्पेस कहाँ थी, वो किसी और यूनिवर्स में थी या ऐसे ही थी, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो सकती व्हेन देयर इज़ समथिंग प्रेजेंट इन इट। अगर कोई स्पेस इतनी बड़ी है कि उसके अंदर वो पॉइंट साइज पार्टिकल है जो कि पूरा यूनिवर्स क्रिएट करेगा, तो स्पेस का कोई ना कोई महत्व तो होना चाहिए, भले ही वैक्यूम हो, बट कहीं तो वो वैक्यूम क्रिएटेड होगा। दिस थ्योरी वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। हालांकि क्योंकि नाउ this scientist, which was Georges, let's call him that, and without taking his surname, said that there was a creator, there was a god which led to this contraction. अगर वो creator ना होता, वो god ना होता, तो फिर ये contraction ना होता और universe ना create होता। Because he said that the church wanted to influence people कि अगर ये क्रिएटर ना होता तो ये यूनिवर्स ही ना होता, मतलब ह्यूमंस भी ना होते। तो उसी के साथ साथ जब गैलीली ने अपनी थ्योरी दी थी कि एवरीथिंग एग्जिस्ट द वे इट इज़ बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ अनदर यूनिवर्स, तो वो थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई थी बिकॉज गैलीली किसी क्रिएटर में नहीं बिलीव कर रहे थे। मगर इस थ्योरी ने कहा कि देयर वाज अ क्रिएटर और हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं, हाउ वी से, इसीलिए इस थियोरी को अडॉप्ट किया गया उस टाइम पे, और स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट रिलायबल थियोरी, दो इट इज़ अ वेरी फ्यूटाइल थियोरी आई मस्ट से, क्योंकि फैक्चुअल नहीं है। हाइड्रोजन एंड हीलियम के बारे में पता है बिकॉज ऑफ द टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन जो भी उस समय अवेलेबल थी, ऑलराइट। और सबको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम बेसिक गैसेस थी। सो बेसिकली इट इज़ जस्ट अ स्टोरी दैट ही डिजाइंड टू फॉलो अप द फैक्ट्स।
जो कि इवेंचुअली डिस्कार्ड हो जाने चाहिए थे, बट स्टिल बिकॉज द चर्च वाज समवेयर डोमिनेंट उसको कंटिन्यू किया गया. Alright, so this was about the Big Bang Theory. I want you guys to ask your questions or anything that you want to share. Not just questions, जो भी समझ में आया बताओ. क्या नहीं समझ में आया ये भी बताओ. Anyone, anything, please. Someone, any questions? Yes, no? No, Didi. No questions? समझ में आया? कुछ ऊपर से तो नहीं गया? No, Didi. कुछ ऊपर से नहीं गया पक्का? लास्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये याद रखना. इल्मा क्वेश्चन? No, Didi. नो. Understood. अंडरस्टूड पक्का? समझ में आ गया? फ्लेक्स करोगे अब? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. शटलकॉक थ्योरी. सो अगेन कैनवा बैक. कैनवा ऐड कर रहा है अपना. कैनवा से बनेंगे प्रेजेंटेशन फिर से. हालांकि they didn't pay me to advertise it, all right. Shuttlecock theory, it was given by Stephen Hawking, Stephen William Hawking being his first name. He is one of the best scientists that history could ever have because he had the guts to stand against Albert Einstein as well. Halanki he was not alive by that time, Albert Einstein, but he was the one who stood against Albert Einstein, stating एक बहुत फेमस लाइन कही थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, गॉड डज नॉट प्ले डाइस. ये इसलिए कही थी बिकॉज क्वांटम थ्योरी के ऊपर 2 साइंटिस्ट ऑलरेडी काम कर रहे थे. ऑलराइट, उन 2 साइंटिस्ट ने अपना जो भी काम उन्होंने किया था क्वांटम थ्योरी के ऊपर, उससे पहले हम लोग क्लासिकल थ्योरी में बिलीव करते थे, हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते थे, हम लोग सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ते थे. बट जब हम लोग और छोटी छोटी चीज़ों में घुसने लगे, फॉर एग्जाम्पल एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर ग्लूऑन्स है, ग्लूऑन्स के अंदर क्वार्क्स हैं, जब हम लोग इन सब चीज़ों के अंदर जाने लगे, मतलब हम लोग क्वांटम मतलब छोटा, स्मॉल, हम लोग उसमें घुसने लगे. क्वेश्चन अथर्वा, क्वेश्चन. ऑलराइट, तो जब हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों में घुसने लगे, सो पीपल weren't श्योर अबाउट इट. उस समय सबसे फेमस साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस थे. तो लोगों ने अपना काम उनको सबमिट किया, रिलाइंग अपॉन हिम कि वो उनको जज करके सही से बताएंगे. ही टुक द मॉडल एंड ही पब्लिश्ड इट इन ग्रीक, स्टेटिंग कि उन्होंने खुद इस पे काम किया है. सो आफ्टर दैट दीज 2 साइंटिस्ट स्टार्टेड टू फाइल केसेस अगेंस्ट हिम. उसके बाद इन्होंने गुस्से में आके ये लाइन कही कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस, कि गॉड गेम्स नहीं खेलते और इतने छोटे पार्टिकल्स नहीं होते. बेसिकली ही मेंट दैट ही वाज डिस्कार्डिंग द क्वांटम थ्योरी ऑल बाय इटसेल्फ, जबकि उन्होंने वो खुद थ्योरी एटलीस्ट पब्लिश करी थी अपने नाम से. Alright, so Stephen Hawking had the guts to stand against him and to speak this thing against him. Stephen Hawking gave 9 theories in total. The most famous being the theory of everything, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं. Not today, we don't have that much time. मगर theory of everything is a very very detailed theory, और स्टीवन हॉकिंग का मेन मोटिव था अपनी लाइफ में कि जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, फोर्सेस हम पढ़ते हैं, उन सबको एक में कंबाइन कर दें. मतलब पूरा यूनिवर्स एक फोर्स से चलता है. दो ही ऑलमोस्ट रीच इट्स द कंप्लीशन, वो चाहते थे जो करना, वो कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ हिज डिमाइजल ऑफ कोर्स. दो I'll just quickly show you the picture of him. You guys know Stephen Hawking, right? सुना है, देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. फेमस हुए थे 2018 में अपनी डेथ के बाद, राइट? दिस वाज स्टीवन हॉकिंग. ये जो इनकी डिजीज दिख रही है, इट वाज अ न्यूरल डिजीज. न्यूरल डिजीज मतलब स्पाइनल कॉर्ड, पता है सबको, ब्रेन से पीछे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होती है. तो हाँ, तो वो स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी में, मान लो हम लोग ने कुछ गर्म टच किया तो वो स्पाइनल कॉर्ड ही तक जाता है वो सिग्नल हमारी नर्व्स के थ्रू. ठीक है, इनकी स्पाइनल कॉर्ड क्या, ओ शिट, लाइट चली गई.
एम आई बैक? कैन यू गाइस सी मी? लाइट चली गई थी, लाइट कम भी हो गई है. एम आई ऑडिबल, विजिबल क्लियरली? कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes. Yes, दीदी. सो वी वर ऑन स्टीवन हॉकिंग. तो इनको न्यूरल डिजीज़ हुई थी व्हेन ही वाज 21. दी डॉक्टर सेट कि ये 3 साल से ऊपर नहीं जी सकते. दैट मीन्स ही हैड टू डाई बाय द एज ऑफ 24. बट दिस मैन and his love for science led him to live for 72 years, and he did blunders throughout his lifetime. He created what he wanted to, at least as much as he could. ठीक है, तो उन्होंने 9 थियरीज दी थी जिसमें से सबसे फेमस थियरी ऑफ एवरीथिंग हुई थी. वील डिस्कस अबाउट इट सम अदर डे. दो अब शटलकॉक थियरी पे आते हैं. तो पहली थियरी जब स्टीवन हॉकिंग ने दी थी, जब वो अपनी पीएचडी कर रहे थे, सो ही सेड दैट कोई क्रिएटर नहीं है, कोई क्रिएटर था ही नहीं, और ये जो पार्टिकल वगैरह का डिस्कशन हो रहा है ये था ही नहीं. इट वाज अ पार्टिकल प्रेजेंट इन अनदर यूनिवर्स, जो कि हमारा पेरेंट यूनिवर्स था, और उससे हमारा नया यूनिवर्स निकला है. बट इवेंचुअली आफ्टर ही डिड मोर रिसर्च, ही गेव दिस शटलकॉक थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है. यू ऑल हैव हर्ड कि अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी अभी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है लाइक अ बलून, बट सम डे इफ़ वी आर कॉलिंग इट अ बलून, वो कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, राइट? सबने पढ़ा है, सुना है कहीं एटलीस्ट कि यूनिवर्स अभी एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है, फिर कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, भले ही सुना होना ना हो. बट अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी अभी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा. This man, Stephen Hawking, along with the research, doing research with a Belgian mathematician, went against this theory, and he said कि shuttlecock theory के according universe कभी भी contract नहीं करेगा, always expand करता जाएगा. So all of you have seen a shuttlecock, right? इसमें भी मैंने दिखा दिया. सो यू नो कि वो हमेशा एक्सपैंड करती जाएगी, डाइवर्जिंग रहती है, और डाइवर्जिंग लाइंस नेवर कॉन्ट्रैक्ट. ये भी पढ़ा है, डाइवर्ज कभी नहीं करेंगी, कन्वर्ज कभी नहीं करेंगे. आई एम सॉरी, पैरेलल लाइंस दो कन्वर्ज कर जाएंगी इन्फिनिटी पे जाके, बट डाइवर्जिंग लाइंस कभी भी नहीं कन्वर्ज करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट स्टीवन हॉकिंग सेड कि यूनिवर्स का क्रिएशन, हम लोग बिग बैंग थ्योरी को सही मानते हुए, भले यूनिवर्स का क्रिएशन उस कोलिजन से क्यों ना हुआ हो, उस बैंग से क्यों ना हुआ, उस पार्टिकल से क्यों ना हुआ हो, बट कंसिडरिंग कि एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, वो कभी भी कम नहीं हो सकती. एनर्जी हमेशा बढ़ते फॉर्म में रहेगी. डेसिपिएशन इतना कम होगा कि हमेशा जो वर्किंग फॉर्म ऑफ एनर्जी रहेगी वो हमेशा ज़्यादा रहेगी. दैट इज़ व्हाट ही सेड. द यूनिवर्स हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट. इट विल जस्ट गो ऑन द वे इट इज़, unlike human life. So human life is a cycle, it starts, it ends. But the universe will not follow a cycle. It will start and it will go on. Sorry, लाइट आ गई. लाइट अभी नहीं आई, हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट ही सेड. दिस इज़ अ बेसिक मॉडल जो कि मैंने पिक्चर दिखाई है. तो देखो, उन्होंने इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में यू कैन सी अ गैशियस थिंग, राइट? वो हाइड्रोजन और हीलियम है, दिख रहा है सबको इस पिक्चर में. Yes, Didi. पॉइंट ऑफ द शटलकॉक, राइट? तो उन्होंने उस बिग बैंग थ्योरी को वहाँ तक सही माना. देन ही सेड, उसके बाद स्टार्स क्रिएट हुआ. उसके बाद जो दिख रहा है झुंड लाइट सा, दे आर स्टार्स इटसेल्फ, ठीक है. स्टार्स के बाद देखो गैलेक्सीज दिख रही हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज मिडिल पॉइंट पे. सबको पता है हमारी नेबरिंग गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा, राइट? एंड्रोमेडा याद रखना, उसके बारे में भी मैं इवेंचुअल डिस्कशन करूँगी. तो जब ये इतनी इन्होंने ये थियोरी सही मानी और उन्होंने ये बताया कि ये एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा, और ये जो फिर मल्टीवर्स की थियोरी इसी के बाद आती है. दैट आई विल डिस्कस एज अ बोनस थियोरी इन द एंड. बट टिल नाउ इज दिस शटलकॉक थियोरी क्लियर? बहुत ब्रीफ डिस्कशन था. दिस साइंटिस्ट went against his own words. Initially he said that there was no creator, but considering, देखो यहाँ पे पॉइंट साइज पार्टिकल से क्रिएशन तो हुआ है ना, सो ही सेड दैट देयर वाज अ क्रिएटर. अगर तुम लोग स्टीवन हॉकिंग की फर्स्ट बुक पढ़ोगे, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो उन्होंने अपनी PhD टाइम में लिखी थी, तो उसमें तुम लोग पढ़ोगे दैट ही गोज अगेंस्ट द फैक्ट ऑफ अ क्रिएटर एग्जिस्टिंग. बट अगर तुम लोग उनकी इस बुक कॉल्ड ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस अगर पढ़ोगे तो उसका
फर्स्ट क्वेश्चन जो कि उन्होंने डिस्कस किया एज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, डज गॉड एग्जिस्ट, डू गॉड एग्जिस्ट, समथिंग लाइक दैट. Read both of these books, you'll see how different his thoughts were, but still they were somewhere leading up to the same thing. He was trying to bring out one force out of everything. Yes, Asa, any question? What was the name of the second book? Brief answers to the big questions. Thank you. Both of these books are amazing. I am a big fan of this guy, of this scientist. He has done some amazing blunders. If you want suggestions about the books, about different books on astrophysics, not just from Stephen Hawking but from different scientists, you guys can ask me in the end. I'll tell you around 10 to 15 different books if you want to read in depth about it, and about different topics as well. मैं कल ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा थोड़ा तुम लोग को डार्क मैटर में भी ले जाऊँ थोड़ा सा, बट कंसिडरिंग कल का टॉपिक भी थोड़ा डीप है, सो वील सी. तो ये शटलकॉक थ्योरी होगी. अब हम लोग आगे चलें. शटलकॉक थ्योरी में कोई क्वेश्चंस? No, Didi. नो, ठीक है. Now comes the Turok theory. It was given by Neil Turok. So Neil Turok worked with Stephen Hawking at some point in time in his life. नील ट्यूरॉक और स्टीवन हॉकिंग एक साथ एक थ्योरी पे काम भी कर रहे थे, जिसके दौरान ही नील ट्यूरॉक को आइडिया आया ट्यूरॉक थ्योरी का. ठीक है. तो ट्यूरॉक थ्योरी ऑफकोर्स उनके सरनेम से उठा के बेसिक सा नाम दे दिया और बेसिक सी थ्योरी दी थी. ठीक है. दैट वाज गिवन बाय नील ट्यूरॉक. लेट अस टॉक अबाउट इट. Let me open a picture for it. And this is Neil Turok, the scientist that worked with Stephen Hawking as his lab assistant or as a research assistant, whatever you want to call it. This was the theory, basically what he gave. Now, what does this picture mean? हमारा यूनिवर्स मैटर से बना है. सबको पता है मैटर है. मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ये तो सबने पढ़ा है, 6th से पढ़ते आ रहे हो, 4th से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ा है, राइट? सो वी कॉल दिस द यूनिवर्स ऑफ मैटर. ओके. अब हम लोग अपने यूनिवर्स को एक जगह रखते हैं और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था. नाउ लेट अस ब्रिंग इन टू द पिक्चर अनदर यूनिवर्स जो कि अपने आप में भी अलग से एग्जिस्ट कर रहा था. नाउ फॉर एवरी मैटर पार्टिकल which is electron, proton, neutron, hold together forming an atom, there is an anti-matter particle जो कि हमारे यूनिवर्स में कभी प्रेजेंट नहीं होगा. क्योंकि अगर एक ही यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर एक साथ प्रेजेंट हो जाए तो वो आपस में इंटरैक्ट करके कोलाइड करके ज़ीरो हो जाएगा. मतलब कुछ भी नहीं बचेगा. वो फिर से स्पेस टाइम कंटिन्यूम पूरा ख़त्म. स्पेस टाइम कर्व जैसी कोई चीज़ होगी नहीं. सो ही सेड दैट इंडिपेंडेंटली दोनों अलग से थे, अलग से एग्जिस्ट कर रहे थे, अलग से काम कर रहे थे. बट देन दीज टू डिफरेंट यूनिवर्सेस ये दोनों आपस में आए. दे केम टुगेदर बिकॉज ऑफ ऑल द फोर्सेस लीडिंग अप टू देम. दे केम नियर ईच अदर and these two particles and these two universes, for every, let us call this our universe and let us call this anti-universe, ये दोनों आपस में आए and then that bang happened. So there was no creator, nothing, but there was a bang according to this theory. But that bang did not lead to the creation of anything. That bang led to the exchange of these two universes. Now when this exchange happened, एक बहुत बड़ी चीज़ ने शेप ले लिया हमारे यूनिवर्स में. दैट इज़ डार्क मैटर विच इज़ 95% ऑफ द यूनिवर्स. ओनली 5% ऑफ द यूनिवर्स जिसमें हम लोग हैं, हमें खाली 5% यूनिवर्स के बारे में पता है क्योंकि खाली 5% यूनिवर्स हमें दिख सकता है. दैट इज़ विजिबल, दैट हैज़ लाइट. बट 95% ऑफ द यूनिवर्स हमें नहीं दिखता, उसमें कोई लाइट नहीं है. ठीक है. ऑल दीज ब्लैक होल्स बाहर से देखोगे अगर कोई पिक्चर तो देखेगा कि कुछ आसपास रिवॉल्व कर रहा है, बट इनसाइड दैट इट इज़ ऑल डार्क. It is a very, very fascinating thing in itself. I can talk about it maybe today if we have time. After the second session is done, if you guys want to talk about it, we can. Note down wherever I'll note it down in my head. If I have time, I'll talk about it. So basically, this theory said that these two universes existed where they are. Now they came near each other, and when they came near each other, एक point था जहाँ से ये लोग अपने आप को क्रॉस कर गए. दैट मीन्स दैट पॉइंट फिल्टर्ड आउट सम स्टफ जो कि एक दूसरे यूनिवर्सेस में एक्सचेंज हो गया. जो एंटी मैटर पार्टिकल्स थे, क्योंकि वो हमारे यूनिवर्स में ऐसे नहीं एग्जिस्ट कर सकते, दैट इज़ वाई दे हिड बिहाइंड दीज थिंग्स लाइक ब्लैक होल्स एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स, वर्म होल्स, वाइट होल्स.
black holes, wormholes, and white holes form an entire thing for traveling into another universe. That I'll talk about. It acts like a tunnel. So that is another thing. But then he said कि इसी के बाद मल्टीवर्स थ्योरी सच हो सकती है, इसी के बाद टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है एनी टाइम इन द फ्यूचर. बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो इसका मतलब कोई मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स एक्सचेंज नहीं हुए थे. और अगर मैटर और एंटी मैटर नहीं एक्सचेंज हुआ था, सब चीज़ के पास पहले से ही मास था और सब चीज़ हमारे यूनिवर्स में सिर्फ मैटर है, तो फिर हम लोग अपना 95% ऑफ द यूनिवर्स क्यों नहीं देख पा रहे हैं. हम लोग चाहे जितना चाहें उसको एक्सप्लोर करना, हम लोग खाली उसकी थियोरीज दे पा रहे हैं, खाली इक्वेशंस दे पा रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाट ही सेड. To brief it, two universes existed, they crossed each other, bang happened, bang was there, agreeing to that fact of the Big Bang Theory, but did not believe in a creator. They just exchanged places, and that is how antimatter became a part of our universe as well. Right? कुछ समझा, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, ऊपर से गया, बताओ. Give me a second. हेलो. हाँ, दीदी जॉइन नहीं हो रहे. एक बार आप दूसरे से करके देखिए, दूसरे अकाउंट से किसी. हाँ, बताओ कोई क्वेश्चंस? यस, नो, एनीथिंग? No, Didi. हाँ रोशनी. What is the space-time curve? ओके, सो स्पेस टाइम कर्व आइंस्टाइन ने दिया था. ठीक है. सो ही से स्पेस टाइम कर्व की अगर तुम लोग ने पिक्चर देखी हो, आई डोंट नो इफ आई कैन शो इट, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन, बट यू गाइज कैन डू अ क्विक सर्च ऑन गूगल एंड you'll find अ थिंग लाइक दिस. एक कपड़ा जैसा लगेगा, कॉल इट टाइम, और उसी में एक बीच में झोल सा दिखेगा जिसमें हमारी अर्थ जा रही है. Right? So there's this concept called time. Let us call it a concept right now. Time is the fourth dimension, right? Some people call it the fourth, some people call it the fifth. Considering gravity, fourth ले लेते हैं. So different books में different दिया है, but broadly कहा जाता है कि time fourth dimension है. Space टाइम कर्व स्पेस और टाइम को कंबाइन करके बना है. अगर हमारी अर्थ, बेबू मौसी लाइट चली गई थी. अच्छा ठीक है, ओके. अगर हमारी जो अर्थ है ये स्पेस में थी, तो ये जो अगर अर्थ ही नहीं, समझो कोई भी पार्टिकल जो कि मैटर हमें फॉलो करता है, अगर ये स्पेस में, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द मोस्ट बेसिक वे पॉसिबल, आई वोंट गो इनटू द डेफिनेशंस. So if this space existed, then how did the concept of time come? This space and time made a kind of, what do you call it? Let us call it a cloth, basic language में. They crisscrossed each other. बेबू मौसी, हाँ, ये साइरन हेड की आंख है. सॉरी, साइरन हेड की आईज है ये. नहीं, ये ट्यूरॉक थ्योरी है जो कि तुमने मिस कर दिया. मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो दीज टू थिंग्स, स्पेस एंड टाइम, इन लोगों ने आपस में एक वेब टाइप का डिज़ाइन कर लिया, जिसकी वजह से ये टाइम का कॉन्सेप्ट हमारे स्पेस, हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ साथ बढ़ रहा है. All right, so this is a curve, or this is a kind of fabric which holds the whole universe together, जिसकी वजह से टाइम अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. कुछ समझा, कुछ समझ में आया रोशनी? यस दीदी, यस. समझ में आया. अथर्वा, आई सेंड यू अ रिकॉर्डिंग, तो उसमें से समझ में आ जाएगा जब इसने स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछा. ठीक है. कैन यू गाइस सी मी? इट इज शोइंग कि मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है. लेट मी चेंज द वाईफाई. मैं 1 मिनट के लिए हो सकता है जाऊँ, जिसके मी अ सेकेंड. Can you guys see me and hear me? यस दीदी. परफेक्ट. तो अभी तक ये जो तीनों थ्योरीज डिस्कस की, कहीं पे किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं? पक्का? कुछ ऐसा जो कि नहीं समझ में आया और अच्छे से समझना चाहते हो? कुछ भी ऐसा?
पक्का कोई दिक्कत नहीं है? Okay, then we'll go to this one amazing thing, which is a bonus theory for today, the theory of multiverse. This is a humongous thing. It'll take me a little bit time, but before that, I'm taking a video from my own campaign that I run, the Cosmic Wanderers. I want to show you guys something. Just look into it. Okay, you guys saw it? क्या समझा? कुछ समझा? It just made you feel futile. I'm sorry. And in the end, can you see group of universes? So this group of universes is nothing but the multiverse. Alright? Earth, planetary systems, galaxies, universe, universes. That means हमारे हर एक लाइफ फॉर्म के लिए एक पर्टिकुलर यूनिवर्स है. हमने जिस सेकंड में जी लिया, हम जिस सेकंड में जीने वाले हैं, सबके लिए अपनी एक टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है, सबके लिए अपना एक यूनिवर्स है. देयर इज़ अ यूनिवर्स इन विच यू आर नॉट स्टिल बॉर्न एंड देयर इज़ अ यूनिवर्स जिसमें तुम्हारी डेथ हो चुकी है. देयर इज़ अ यूनिवर्स जिसमें मैंने अभी एक्सप्लेनेशन 12 बजे स्टार्ट किया था. देयर इज़ अ यूनिवर्स जिसमें मैं 2 बजे ख़त्म भी कर दूँगी. 2 बजे से आगे भी बढ़ सकता है. But all that it means, all that it sums up to is that there are multiple timelines with multiple universes in it. Now, these multiple universes are not just confined to the human race. जितने भी इंटेलिजेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, इनफैक्ट जितना मैटर, एंटी मैटर, सबके लिए अपने अपने यूनिवर्सेस हैं. मल्टीपल टाइमलाइंस का मतलब समझ रहे हो? जब मैंने मान लो अभी तुम लोग अभी 12 बज रहे हैं, 12:51 हो रहा है. ऑलराइट, किसी यूनिवर्स किसी टाइमलाइन में 12:52 हो चुका है. नाउ हाउ डज दिस थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स हेल्प अस? और ये इतनी कंफ्यूजिंग थ्योरी क्यों है और इसको क्यों रखा गया? क्या मतलब है इस थ्योरी का? तुम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट का नाम सुना है, टाइम ट्रैवल. टाइम ट्रैवल का नाम सुना है? यस, नो, हाँ हाँ. नो, नहीं सुना तो सुन लो. किसने सुना है? सुना है? ओके. रोशनी, कोई क्वेश्चन है कि सुना है? सुना है, राइट? ओके ओके, परफेक्ट, सबने सुना है. और टाइम ट्रैवल का मतलब ये है कि हम लोग अपने पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, राइट? हम लोग अपने पास्ट में जाके देख सकते हैं हमने कैसे अपना बचपन जिया, या फ्यूचर में जाके देख सकते हैं हम क्या बन गए. बट तुम लोग अगर खुद सोचो कि अगर तुम लोग अपने ओरिजिनल टाइम में पास्ट या प्रेजेंट में ट्रैवल करोगे, पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल करोगे, तो तुम लोग अपने प्रेजेंट में तो रहोगे ही नहीं. देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड पैराडॉक्सेस व्हिच comes. I don't want anyone to say anything about it, but this is called एक paradox का example दे रही हूँ, grandfather's paradox. It goes bad somewhere at some point, but please bear with me for this, because that is what the person who created this paradox said. Atharva, okay. Now यू आर इन योर ओरिजिनल टाइम लाइन. तुम लोग सोचो, तुमने टाइम मशीन बना ली, तुम लोग अपने पास्ट में गए और तुमने अपने ग्रैंडफादर को तब मार दिया जब तुम्हारे फादर नहीं हुए थे. ओके, सो दी ओनली पॉइंट ये जब कहाँ खराब होती है, अगर तुमने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया, ठीक है? सो व्हेन यू किल्ड योर ग्रैंडफादर को कब मारते हैं? नहीं मारते नहीं, ये थ्योरी है, इसीलिए मैं बोलना नहीं चाह रही थी. बट यार, दैट इज जस्ट वन थ्योरी कि अगर तुमने एक टाइम मशीन बनाई और तुम अपने पास्ट में ट्रैवल किए और तुमने अपने ग्रैंडफादर को तब मारा जब तुम्हारे फादर नहीं हुए थे, मतलब तुम्हारे फादर नहीं हुए थे, तो तुम कैसे हो गए? और अगर तुम नहीं हुए थे तो टाइम मशीन किसने बनाई पास्ट में ट्रैवल करने के लिए, राइट? मेरे को क्या मालूम? थियरी है पैराडॉक्सेस की, ठीक है? तो अगर तुम नहीं हुए थे तो वो टाइम मशीन किसने बनाई पास्ट में ट्रैवल करने के लिए? कुछ समझा कि ऊपर से गया?
समझ रहे हो, कंफ्यूजिंग है। और क्या दिक्कतें हो सकती है अगर हम लोग टाइम ट्रैवल अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में रखें तो। समझा सबको? Yes, yes. Yes, please. यस। सो इसीलिए द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्सेस केम, मतलब कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सेस। तो अगर हम लोग ने टाइम मशीन बनाई और हम लोग अपने पास्ट में गए, तो हम लोग ने अपने ओरिजिनल ग्रैंडफादर को नहीं मारा, बट हम लोग ने उस यूनिवर्स से अपने ग्रैंडफादर को, किसी और यूनिवर्स पे अपने ग्रैंडफादर को मारा, और हमारी ओरिजिनल टाइम मशीन में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब हम लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, बट हम लोग उसके साथ ही यूनिवर्स भी ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग अपने ओरिजिनल टाइम में कहीं पास्ट और फ्यूचर में नहीं जा रहे हैं, हम लोग किसी पैरेलल टाइमलाइन में जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर अपने पॉइंट को एक्सप्लोर करना है। If we make a time machine and go into the past and drink the water that could save someone's life, और हम लोग ने अगर वो पानी अपनी ओरिजिनल टाइम में पी लिया, फॉर एग्जांपल समवन इज़ एन आस्थमिक पेशेंट, लेट से हम लोग ने वो पानी उस समय पी लिया जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और हमारी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो जो भी हमारी ओरिजिनल टाइम में उस पीढ़ी का जो भी फ्यूचर लिखा था, दैट फ्यूचर वुड नेवर बी उसने पॉसिबल। पानी पिया, हमारी गलती क्या है? तुमने पानी पिया, ठीक है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल यूनिवर्सेस की थ्योरी आई। मतलब हम लोग अपनी ओरिजिनल टाइम में फ्यूचर और पास्ट में नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपनी पैरेलल टाइमलाइन में फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सेस, दिस इज़ द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्सेस। सो मल्टीवर्सेस, डू दे एग्जिस्ट, एंड हम लोग कैसे किसी और यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। आई वोंट गो डीप इनटू डार्क मैटर, बट जस्ट टू ब्रीफ यू, एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं 3 मेजर यूनिट्स हमारे यूनिवर्स की। दैट इज़ अ ब्लैक होल। ब्लैक होल सबको पता है हमारे यूनिवर्स में रहता है और सारी चीज़ें अपनी तरफ खींचता है, अभी तक यहीं तक छोड़ते हैं इसे। और बीच में एक वर्म होल रहता है। वर्म होल एक टनल की तरह एक्ट करता है, जो कि इधर की चीज़ें उधर ले जाता है, और उधर एक वाइट होल होता है जो कि दूसरे यूनिवर्स में खुलता है, ठीक है। मतलब एक एनीवेयर डोर जैसे समझ लो, ये तीनों एनीवेयर डोर का सिस्टम बनाते हैं। तो अगर तुम ब्लैक होल से इधर जाओगे, वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करोगे और वाइट होल से निकलोगे, तो तुम दूसरे यूनिवर्स में प्रेजेंट होगे। वो अलग बात है कि तुम पार्टिकल्स फॉर्म में निकलोगे, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर तुम लोग का जो हाल होगा, तुम लोग अपने जो भी बेसिक यूनिट होगी सेल के फॉर्म में उधर निकलोगे, ठीक है। वो डिस्कशन हाँ निहारिका। दीदी, ब्लैक होल और वर्म होल्स भी कनेक्टेड होते हैं? हाँ, ब्लैक होल्स और वर्म होल्स भी कनेक्टेड रहेंगे। ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, वाइट होल्स आपस में कनेक्ट करके एक सिस्टम बना लेंगे, जिसके थ्रू हम लोग ट्रैवल कर पाएंगे, ठीक है। वर्म होल जस्ट एक्ट्स लाइक अ टनल। टनल देखा है किसी ने? रोड पे जाते हो, अचानक से अंधेरा हो जाता है, तो वो टनल होता है जो कि इस साइड ऑफ द रोड को उस साइड ऑफ द रोड से कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो नहीं वो देखा है। नहीं देखा? तुमने फ्लाईओवर देखा है? फ्लाईओवर भी तो कनेक्ट करता है, फ्लाईओवर के बीच में भी टनल ही होता है, ठीक है। तो जो इस साइड ऑफ द रोड को इस साइड ऑफ द रोड को कनेक्ट करता है, इस साइड ऑफ द रोड से कनेक्ट करता है, वो टनल होता है, एंड दैट टनल इज राइट नाउ वर्म होल। इस साइड ऑफ द रोड जहाँ पर हम लोग हैं, दैट इज़ अ ब्लैक होल, और उस साइड ऑफ द रोड जहाँ पर हमें पहुँचना है, दैट इज़ अ वाइट होल, ओके। बीच में वर्म होल, ब्लैक होल, वाइट होल, अंडरस्टूड? समझे? तो ये मल्टीपल यूनिवर्सेस की थ्योरी, और ऐसे सारे कनेक्शंस बहुत जगह हैं। देयर इज़ नॉट वन ब्लैक होल, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक होल्स प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ब्लैक होल्स प्रेजेंट हैं, और ये ब्लैक होल्स स्टार्स से ही बनते हैं। स्टार्स अपनी खुद की ग्रेविटी के अंदर गिर जाता है, कोलाइड कर जाता है, जिसके बाद ब्लैक होल का क्रिएशन होता है। इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है एक पॉइंट इन टाइम पे जाके कि ये सुपरनोवा, ब्लैक स्टार्स के लाइफ में भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। स्टार्स न्यूट्रॉन स्टार्स में कन्वर्ट करता है, और इवेंचुअली लास्ट में सुपरनोवा में कन्वर्ट करता है। बीच में बहुत सारे फेजेस होते हैं, लास्ट में सुपरनोवा में कन्वर्ट कर जाता है। उस सुपरनोवा में कोई हीट नहीं होती, बट उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है, उतनी ज़्यादा उसकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है, और वो पूरा का पूरा साइज़ अपने अंदर कोलाइड कर लेता है, और उसके आसपास के प्लैनेट्स भी उसके अंदर चले जाते हैं। इसी तरीके से हमारा सन भी कभी ब्लैक होल बनेगा। वेल, वील डिस्कस दैट इन सम अदर क्लास, और मे बी लास्ट में अगर टाइम बचा तो, बिकॉज वी वर सपोज टू हैव 15 मिनट ब्रेक, बट वो मेरे को दिख नहीं रहा, कंसिडरिंग 1 बज गया और अभी एक पूरा सेक्शन बचा है, और अभी तुम लोगों से क्वेश्चन भी पूछना है। ये समझ में आया मल्टीपल यूनिवर्सेस का? दैट इज़ वन यूनिवर्स, ओके, एंड देर आर बॉल्स, these all these balls signify universes,
ठीक है, तो इतने सारे इतनी बड़ी बॉल, इतना बड़ा बैट हो सकता है? यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है। ओके, समझ में आया? किसी के कोई क्वेश्चंस? यस, नो? अगर कुछ ऊपर से गया। आदमी 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 इस बॉल को फेंक कैसे सकता है? आदमी नहीं फेंकेगा ना, यूनिवर्स है। अच्छा, ठीक है, समझ में आया? किसी के कोई क्वेश्चंस? नहीं? पक्का आगे बढ़े? हाँ, क्या हुआ? नहीं? ओके, किसी के कोई क्वेश्चंस पक्का नहीं ना, तो फिर आगे बढ़े। ओके, सबने सुना है एक गेम का, नेवर हैव आई एवर? सुना है ना? नेवर हैव आई एवर खेला है कभी? सुना है? Yes, no, दीदी. सुना है? सुना नहीं? खेला? चलो आज खेलते हैं, बट लेट अस प्ले इट इन अ No, डिफरेंट ma'am. वे। नेवर डिड दे एवर। ओके, सो ये दिस इज अ नेवर हैव आई एवर फॉर नर्ड्स, साइंटिस्ट के लिए है। अब तुम लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट नॉट लाइक एग्जाम वाले क्वेश्चन आंसर्स। अपने पर्सपेक्टिव शेयर करो, फ्री होके, सोचो नहीं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस to interact and to put forward your perspectives. Now the first one is, did they ever think about the possibility of a bigger universe? Any of the scientists, what all we discussed, did they ever think about the possibility of a bigger universe? Anyone? Astha? I think that they might have thought at a time, but not like with like मतलब पूरे टाइम नहीं, बट हाँ कभी कभी एक थॉट आया हो सकता है। ओके, तो स्टीवन हॉकिंग ने जब फर्स्ट थियरी दी थी तो उन्होंने बोला था कि हमारा यूनिवर्स ऑलरेडी एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो स्टीवन हॉकिंग ने कहीं ना कहीं ये कहा था कि देयर इज़ अ बिगर यूनिवर्स, पेरेंट यूनिवर्स, जहाँ पे हमारा यूनिवर्स चाइल्ड यूनिवर्स की तरह एक्ट करता है। ऑलराइट, सो दैट इज़ वन थिंग। अनन्या मिश्रा, Yes. do you have any views to share on this? According to me, I think there is a bigger universe. As the theory of Stephen Hawking says is that there is a parent universe, and we live in a child universe. So I think. Okay, cool. Perfect. So now I want all of you guys to speak. We'll go to the next question, and ये काफ़ी interactive होने वाला है. Did some scientists talk about the existence of a creator and then contradict the same? मेरे को खाली आंसर नहीं चाहिए, explanation चाहिए. Anvika, I'm following the list here. Okay, so after Astha, Ananya, there comes Anvika. Anvika, Yes, see. हाँ. So what do you think about it? Yes, Einstein talked about creator, that God does not play dice. Okay. And I did not understand the second part of the question. Did someone talk about the existence of a creator and then contradict the same? मतलब किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कहा हो कि हाँ क्रिएटर है, और उसके बाद इवेंचुअली उसने नहीं मना कर दिया कि नहीं कोई क्रिएटर नहीं था, या वाइस वर्सा? Yes, Einstein said that there is a creator, Okay. but Stephen Hawking, he stood against him. Okay. So was there one scientist जिन्होंने कभी कहा हो कि क्रिएटर था और फिर कहा हो क्रिएटर नहीं था? Yes, Didi. Yes. Who? Actually, the vice versa happened. Stephen Hawking, in the start actually denied the existence of God and a creator, but later on in his theories, he somehow said that there was a creator and there was an explosion or something like that which took place. उसके बाद the shuttlecock theory came. Perfect. As Roshni said, does anyone want to add up anything to it? Niharika, Siona, Dundan? No?
Yeah, so perfect. Stephen Hawking was the one who said, who initially said that there was a creator, and then he denied his own fact, giving the shuttlecock theory. What Anvika was talking about was Albert Einstein. He gave the statement, God does not play dice. So, Anvika, Einstein was a believer of God. He believed in a creator, and he believed that someone was there and someone is still there, who is the in charge of the whole thing, and whatever wishes you make, he listens to it and everything. He was a big believer in God. But and because he was a big believer since his initial days, he never denied the fact of a creator being there, and he did not want to go against the church. इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी भी ये नहीं कहा कि गॉड नहीं थे. बट या स्टीवन हॉकिंग ने कहा कि इनिशियली कहा कि गॉड नहीं थे, बट उसके बाद उन्होंने क्रिएटर के बारे में बात की इन दी शटलकॉक थ्योरी. ऑलराइट, कोई डाउट था तो क्लियर हो गया? हो गया? आगे बढ़े. Okay. Did they believe in Marvel? Did they believe in science fiction? Did they do something that was too fictional to believe, but it was true? Niharika, Siona. पैराडॉक्स लाइक फिक्शनल तो है बट है ट्रू तो है ही. हाँ. So Marvel के बारे में देखो, मैं I'm not a Marvel fan, but I know that it is all fiction. Considering my brother is a Marvel fan, उसमें भी Marvel का अपना universe है. The theory of multiverse and eventually paradoxes is very fictional to believe, but calculations have proved it to be true. Right? So I don't know if they believed in Marvel or not, but I think every person who is a believer of science believes in every fictional thing that exists. I don't know if you have heard the name of Elon Musk or not. Have you? Elon Musk का नाम सुना है सबने? कोई ऐसा जिसने ना सुना हो? Elon Musk, SpaceX सुना है? Yes. तो इलॉन मस्क ने अपने एक TEDx के इंटरव्यू में कहा था, ही बहुत TEDx के इंटरव्यू देता है वो बंदा, बट एक जब उन्होंने इनिशियली दिया था जब SpaceX की लॉन्चिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था, आई वॉन्ट टू मेक द फिक्शन ऑफ माई टाइम द ट्रूथ ऑफ टुडे, एंड दैट गाय डिड इट. मतलब उस समय जो भी उनका फिक्शन सोचा जाता था कि हम लोग मार्स पे जाएंगे, हम लोग ये सब करेंगे. इन 2024 द फर्स्ट ह्यूमन मिशन, that is next year now, is going to Mars, and it is an all women mission. Seven women, the leader being Catherine, are going together to Mars in 2024. तो क्या कहते हैं, Elon Musk said that as so what जो gist है कि every believer in science believes in fiction and wants to make it true somewhere in the future. ये सब अभी fictional लगता है, but eventually calculations हमें इसमें believe करा रही हैं. In the future ये calculations के साथ साथ reality भी हो जाएगी. We will travel to parallel timelines. We will go beyond our own universe. किसी दिन people are predicting, NASA is predicting 2035 या 2040 तक planetary travel start हो जाएगा. मतलब हम लोग अलग अलग जगहों की ट्रिप प्लान्स करते हैं. जिन माइक बंद कर सकते हो अगर कोई डाउट ना पूछना तो. ओके, थैंक यू. तो कहाँ थी मैं? हाँ, सो राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग टू प्लेसेस. वी वांट टू गो टू अनदर कंट्री. The rich of the today goes to another country, but the rich of tomorrow will go to another planet. Okay, so that is what is science, to make you want to do the fictional stuff. Okay, समझे सब लोग? किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन? The next slide is just a Q&A slide. Any questions, anyone, any perspectives? Did you guys learn something? I want all of you guys to share. Starting with Astha. Astha is the top on the list again. I mean this list which is here on Google Meet. Yeah, someone raised their hand, I guess. No? Okay, yeah, Astha. No questions. No questions. समझ में आया पूरा?
Okay. हाँ Okay. Anvika raised her hand. Anvika, doubts? Yes, Didi. Questions? Yes, Didi. हाँ. Didi, I want to ask about Turek theory. Turok theory. Yes, Didi. Okay. हाँ. I थोड़ा सा समझ नहीं आया था अच्छा ठीक है. Turek theory. तो नील ट्यूरॉक का ये था कि दो यूनिवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे. उन्होंने क्रिएटर के बारे में कोई बात नहीं की, और ये दो यूनिवर्सेस कैसे एग्जिस्ट कर रहे थे उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की. ठीक है. हमारा यूनिवर्स मैटर से बना है, राइट, ये पता है. तो हमारे यूनिवर्स में अब एंटी मैटर पार्टिकल्स भी हैं, बट पहले जब इनिशियली क्रिएशन हुआ था तो खाली मैटर पार्टिकल्स थे. ठीक है. तो हमारा यूनिवर्स ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ पे एक दूसरा एंटी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो कि मैटर नहीं, एंटी मैटर से बना है. हर मैटर पार्टिकल के लिए एक एंटी मैटर पार्टिकल होता है, और अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो वो जगह वॉइड क्रिएट हो जाता है, वो जगह ज़ीरो हो जाती है, कुछ नहीं बचता है वहाँ. तो ये एंटी मैटर और ये मैटर, ये दोनों यूनिवर्सेस आपस में एक साथ आए. द फोर्सेस लेट देम टू कम टुगेदर, और ये दोनों मैटर और एंटी मैटर आपस में एक्सचेंज हो गए, आपस में मिक्सअप हो गए. दैट मीन्स यहाँ से कुछ मैटर पार्टिकल्स उधर चले गए, वहाँ से कुछ एंटी मैटर पार्टिकल्स इधर आ गए. इस तरीके से हमारे यहाँ डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस. अदरवाइज आई एम सॉरी, आई कैन यू गाइस हियर मी? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग? Yes. ओके. You are audible. ओके. बीच में कुछ खुल गया था, चलो ठीक है. सो दीज एंटी मैटर एंड मैटर पार्टिकल्स एक्सचेंज्ड देमसेल्व्स. उसी के साथ हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर का क्रिएशन हुआ. तो ये जब हम लोग अभी ब्लैक होल्स पढ़ते हैं या वर्म होल्स पढ़ते हैं, स्ट्रेंजलेट्स पढ़ते हैं, स्ट्रेंजलेट्स मतलब स्ट्रेंज मैटर, ये भी एक फॉर्म ऑफ एंटी मैटर है जो कि हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है. बट इनिशियली जब हम लोग अपने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जाएं तो ये नहीं एग्जिस्ट करता था हमारे यूनिवर्स से. हमारा यूनिवर्स प्योर मैटर से बना था, हाइड्रोजन, हीलियम, लाइट. और इवेंचुअली इनके बाद अलग अलग गैसेज आती गई और एटमॉस्फेयर क्रिएट होते गए अपने अपने प्लैनेट्स का अलग अलग. सो बेसिकली ये थ्योरी ये कहती है यूनिवर्स ए, यूनिवर्स बी, एंटी मैटर मैटर आपस में इंटरैक्ट किए, एक्सचेंज हो गया, और इनके कुछ पार्टिकल्स उधर चले गए, इनके कुछ पार्टिकल्स इधर आ गए. समझा अनविका? Yes, Didi. Okay. Perfect. Next would be, wait, let me see. Ananya Mishra. No questions. No questions. Perfect. समझ में आया? Yes, Didi. Perfect. Aradhana Rao, that is Tunun. Atharva. Question? नहीं? Okay. निहारिका, समझ में आया? Yes, Didi. कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि ऊपर से गया हो? नहीं. रोशनी, I don't have any questions. समझ में आया? हाँ, बिल्कुल. परफेक्ट. सियोना, कोई क्वेश्चन? Yes. No, Didi. समझ में आया? Yes, Didi. परफेक्ट. ठीक है. So now do you guys want to take a 5-minute break? Do you? Everyone, raise your hands if you want to take a break. Raise your hands as in this, whatever option this is here. You guys want to take a break? Okay. He wants to. One. Any other person who wants to take a break, or should we move to the next part? We have to do 2 sessions every day, right? Okay, so let's take a 5 minutes break. 5 minutes, okay, it is 1:13 right now. We'll come back sharp at 1:16, not even 5 minutes. Have some water. I want to grab my charger. So in 3 minutes I'll be here, okay? Okay? ठीक है. See you guys at 1:16.
So many people left the meeting, I see. I'll quickly call them. Okay, give them a ring. Should I continue? People will join. They are taking a break. They're either having their food or something. So they'll join by 1:30, but I think it will be too late by then. Do you want me to start now? Anyone? Niharika, Nanya, Anvika, Roshni. Yes, you can start. Okay, so I'll start right now. I'll quickly share my screen. Let me. Okay. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes, Didi. Okay. Just give me a second. I need to switch it. Okay. Perfect. So I have an idea. How do I use it? This was the second part of the slide. So this is one thing that I have faced throughout my teenage. I am in the bathroom in the morning. I have an amazing idea, and I know it's not abysmal. It is an amazing idea, and I want to share it with someone, but I can't find the right people. The friends I have either are not interested to listen to it, but somewhere it is important for you to share it, but you don't get the right platform. Experience किया है कभी? चारों में से? Yes, Didi, many times. Many times, right? Though you want to share it, sometimes you even want to discuss it, but you can't. I don't know if I've included that part, but I will talk about it. How do you take your idea beyond the four walls of your room or the bathroom, whatever it is? There are n number of ways for you to take your idea beyond yourself and to the right people. Not just make it a futile conversation and make your friends think that you're trying to frown upon your knowledge, but make it worth it. Because during the years of teenage, you learn stuff, you have perspectives about it, but you are not sure if it is right or not. You want to check it, you also want to let the world know that you have an idea, which is a world changing one, and you want people to experience it the way you want to, but जो हमारे आस पास या जो हमारे साथ लोग रहते हैं, generally they are not the right people for it, right? मैंने बहुत experience किया है and I wanted to clear it out. So the first option is research papers. बहुत डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को कि रिसर्च पेपर्स कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, टीनेज में है, कॉन्फ्रेंस में बैठना पड़ेगा क्या,
कैसे डिस्कस होता है, कहाँ पब्लिश होने हैं. ये पॉइंट तब आएगा रिसर्च पेपर्स का व्हेन यू हैव फेथ इन वॉट एवर यू आर थिंकिंग. यू थिंक ऑफ समथिंग, यू गो ऑन थिंकिंग ऑफ समथिंग. अगर तुम्हारा आइडिया एक जगह पे स्टॉप होता है और अगर तुम खुद के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, देन दैट इज़ नॉट द राइट आइडिया फॉर अ रिसर्च पेपर. But for every question you have an answer, and for every answer eventually you have the next why, then that is the research paper material, and you need to take it beyond the four walls. High school years में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है that people don't want to rely upon your work. It might be a mind-boggling one, but because of your age you are confined within some boundaries. Especially that happens in India. People consider your whatever your opinion, they are inconsiderate of your opinions, even on the small things. Not just your parents, but everyone. Eventually, when you grow up a little more, you will see. But somehow you want to propagate it, and somehow you don't want money to get the control of it. Considering you are in your teenage, paise hai nahi, and your parents are not willing to either give the money, considering that they are not sure of your idea because of your age, and they do not have that much faith in whatever you have searched, whatever you have researched. So right now I'm gonna give you name of 3 magazines, 3 very famous magazines which publish your research papers internationally for free. They are not Indian, first. Second, I have experienced them by myself. I am myself in the process of research paper publication, so I know very closely. बहुत अच्छे से डिटेलिंग में रीडिंग किया है. I'll talk about each and every one. First, I don't know if Ilma is joining or not because she was very interested for this. Okay, we'll see. I'll provide them with the recording anyway. Okay, so the first option is Journal of Emerging Investigators. Again, it is not Indian. Journal of Emerging Investigators, American hai. It publishes the research papers of people between the age of 12 to 25. ठीक है. It is not, sponsored by any particular college, but एक अपनी खुद की organization है which receives research papers not just in astronomy, but मैंने एक दिन research paper पढ़ा था crumbled paper के बारे में. crumbled paper देखा है? अगर paper उठाओ, crumble कर दो, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं, you crumble it, उसके ऊपर पूरे एक मैथमेटिक्स का रिसर्च पेपर पढ़ा था. वो क्रम्बल के कितने डिमेंशंस निकलेंगे, क्या मैथमेटिक्स लगती है, कौन से एंगल पे निकलेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉलो करना चाहिए. इट वॉज अ 22 पेज रिसर्च पेपर ऑन 1 क्रम्बल्ड पेपर. ठीक है. सो दे डोंट कंसिडर एनी आइडिया आर स्मॉल. Any idea that you have, anything that you want to go into, be it your ice cream, whatever ice cream you like, go into the taste, go into whatever it takes for you to be different. अगर कोई भी चीज़ इतनी पसंद आ जाती है that you want the world to know कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग दुनिया से अलग है बट सही है, then you can go to Journal of Emerging Investigators. They do not charge you any money, but इसमें एक दिक्कत ये है कि seasons होते हैं publication के. There's a particular season in which you need to publish the research paper. You need to send them the research paper. It will be reviewed and then it can also be denied. अगर उनको लगता है, पहली बात तो वो अपने सही डिपार्टमेंट में भेजेंगे हमेशा. ऐसा नहीं कि तुमने बायोलॉजी का रिसर्च पेपर लिखा और उन्होंने फिजिक्स वालों को भेज दिया, सो ऑफ कोर्स उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट दे विल ऑलवेज सेंड देम टू द राइट डिपार्टमेंट. द ओनली प्रॉब्लम विद इट इज़ सीज़न. मान लो इनका सीज़न फरवरी का था, तुम्हें मार्च में आइडिया आया, तो तुम्हें फरवरी का फिर से वेट करना पड़ेगा अगले साल का रिसर्च पेपर देने के लिए. ठीक है. सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम विद इट, बट इट इज़ फ्री. Any idea is welcome, from the smallest to the largest. किसी भी फील्ड में जिसमें भी इंटरेस्ट हो, from the pinpoint of a needle, you can go and publish it if it is right, if you have the mathematics about it. There's this one book, let me see, God Created the Integers. It is by Stephen Hawking.
It has the mathematics of everything. Pythagoras theorem से लेके बेसिक नंबर न्यूमरल डिजिट से लेके वो तुम्हें कैलकुलस के हार्डेस्ट तक ले जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ कवर करेंगे. एंड दो इट इज़ अ वेरी थिक बुक, very thick book, 3,000-4,000 pages, but once you read it you'll get mathematics like anything. It is legit the mathematics of everything. So whenever you want to go for a research paper and you want to go into the mathematics of anything, I will suggest that book. Go for it, read through it, अच्छे से पढ़ो और उसी से कहीं ना कहीं से mathematics चुरा के आइडिया लेके put your calculations in, put your numbers in, put your readings in and publish it. Never think of your idea as small. The time when you are underconfident about your own idea, you cannot expect anyone to have confidence in you. अगर अभी मैं आगे भी platforms बताऊंगी where you can simply discuss your idea with other people and see what they think about it, what perspectives they have about it, right? So that is one journal. The next one is Journal of Student Research. So this is exclusive for students, especially for high schoolers. There are a bunch of US universities which sponsor it, but a bunch of them, the top ones, all the Ivies, MIT, Caltech, they all are Georgetown, they all are collaborated with it. Now अब जब तुमने research लिखी, as they are collaborated with these particular universities, your research will go into all these universities' professors related to your department. Okay, this also has seasons, but there's no one season for publication. There are 4 to 5 throughout the year. So that if you miss any season, you still have 2 months to work on your research, and maybe in 2 months you can publish it. Now the thing with it is कि these research, whatever research you do, will go to these professors, okay, and it will just go to one professor of one university, and you are not sure if this university professor is gonna agree with your idea or not. If in case that professor of your department, whichever thing you are sending in, if they do not agree, they send it in to some other university. Now this way your research paper is circulated among a bunch of universities. All right, all these professors with specialization in the field, whatever you're writing the research paper in, will read through your paper. If, which happens very rarely, if your research paper is read by the first professor and he loves it and he agrees with your idea, then it will take weeks for your research paper publication. That means 1 or 2 weeks. Okay, but if the first professor does not agree with it, second does not agree with it, and at the end 12th one agrees with it, then it might take months for your publication. That is one problem with it. बहुत लंबा वेट है और confirmation नहीं है. What if the 12th professor does not agree with it as well? तो फिर तुम्हारी जो जब से तुमने स्टार्ट किया था, तुमने सबमिशन किया और तुमने क्या कहते हैं 12th प्रोफेसर ने 12th यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो वो तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया. If the first professor rejects it and sends it to you directly, then तुम्हारा वो टाइम बच गया. You'll start working on the other thing. You'll start maybe adding up to that, whatever the review he shares. Okay, now one problem with it is कि क्योंकि ये different universities के पास जा रहा है, अगर तुम्हारा research paper reject होता है तो ये review नहीं देते. ये तुम्हें सिर्फ बताएंगे कि reject हुआ है, review नहीं देंगे. This is for free again. Though if your research paper is published, so I think they charge you $40 after it is reviewed by everyone for the publication in the magazines. Not just one magazine, they will collaborate with other magazines, और ये जो भी तुम्हारी जितनी भी यूनिवर्सिटी से रिव्यू हुआ है सब में पब्लिश होंगे उनके मैगजीन में तुम्हारा रिसर्च पेपर. ठीक है, so that is one boon of it, but there are also banes of it. All right, ठीक है, that is one. Now let me take you to the other one, YGS. Okay, Young Global Scientist Journal. सबने किसी ने येल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? Yes, दीदी. येल का सुना है? येल इज एन आईवी लीग, वन ऑफ द टॉप 3 आईवीज. ठीक है, टॉप 3 आईवीज कौन सी हैं? हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन. ओके,
Yale University conducts this समर प्रोग्राम कॉल्ड येल यंग ग्लोबल स्कॉलर्स. तो ये उसी की एक ब्रांच है यंग ग्लोबल साइंटिस्ट जर्नल. हालांकि इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू दोज स्टूडेंट्स, इट इज़ बेसिकली फॉर हाई स्कूलर्स. 12th तक के बच्चे फ्रॉम 6 to 12, if they have any idea they can publish it here. All right. So now one problem is you write the research paper and it goes to Yale University. Okay, whoever the professor is, if that one professor does not agree with it, it will be rejected on the point. तो अगर तुमने जितनी भी मेहनत की है, but if your opinion does not match with his or hers, then it will be rejected. But the waiting period is small. You will get a review, a detailed review. प्रोफेसर तुम्हें खुद का एक एक पॉइंटर का लिख के देगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती लग रही है. सो यू कैन ऐड ऑन टू इट एंड सेंड इट टू हिम अगेन. बट इफ़ ही कम्प्लीटली रिजेक्ट्स इट और बहुत सारे पॉइंटर्स दे देता है, देन दैट प्रोफेसर वोंट एक्सेप्ट इट अगेन. उसको लगेगा कि आइडिया ही फ्यूटाइल है. सो यू वोंट बी एबल टू पब्लिश द सेम फील्ड रिसर्च पेपर इन दिस जर्नल अगेन. You need to go to another journal. Now, if you apply to Yale Young Global Scholars, which is open for 9 to 12 students, we'll talk about it tomorrow. If you apply to Yale Young Global Scholars and if you get in, then you don't have to pay any amount for this publication. But if you are not applying and you by chance don't get in, then you have to pay a fee of $50 for publication. After publication, review is for free. But if you want a detailed review, a very detailed review for every pointer, you want a subheading, you want a paragraph for every pointer, then you need to pay, I think, $25 for the review as well. Okay, so that is not very money friendly. The money friendly one is the first one. If you want, if you don't want to wait long, then the second one is not for you. But if you want the research paper to be published ASAP, and if not, you want to review ASAP, then this is your way to go. All right. Now, they do not want to confine you because of the financial problems. You can always apply for fee waivers. They won't charge you anything. But there are a bunch of documents that you need to submit in that case. First being your ITR, which is International Tax Returns, Indian tax returns. Your parents would be having it. Then next is your passport statements, that is your bank statements. All that is required. वो तुम्हें वहाँ भी अगर तुम बाहर अप्लाई करोगे तो उसमें भी application में लगेगा. That I'll share tomorrow. Okay. So the first way of taking your idea beyond your four walls, very officially, is research papers. Okay. Now let me take you to the next one. Student clubs. So student clubs are not just the school clubs. There are n number of online student clubs that you guys don't know about, or if you know about, you don't utilize it the right way. The first one being the IVLA. It is a very, very famous student club, but it is more famous in America. So in this, what you have to do, you have to log in. They'll take you to a home window, whatever your dashboard is, and they'll ask you to join a particular discussion club. That is, there won't be an astronomy club, but there might be a black hole club inside. As in, पूरे subject का एक club नहीं रहेगा, but सब parts का हमेशा club रहेगा. That is what it is. And there are around 10,000 to 20,000 kids inside one club. So whenever you some idea pops into your mind but you don't have the right people to discuss it with, you can always join one club inside here. It is completely free. You will get an environment to talk about it. Secondly, it's not social media. There are people discussing the same thing. It won't divert you anywhere. In fact, people would start questioning you. Once people start questioning you, you'll get that audience reply. You will see what questions the person might have while reading your research, while reading anything that you publish. Alright, so that is one. I think it is amazing. You should go for it. Second is EDX. EDX is not just a learning platform. EDX or edX, some people call it. It is a platform for where different university professors teach you for free. Okay, now how do you get a student environment in it? For example, you want to take a course from MIT, or you want to take a course from Princeton. You sign up for it.
you start with the course, and these courses are absolutely free. Okay, कोई चार्जेस नहीं है. टॉप यूनिवर्सिटी के कोर्सेज एकदम फ्री हैं. until and unless you want to get a certificate, you need to pay $42 for that, depending upon the university again, but generally the standard pricing is $42. but the courses are completely free. चाहे जिस लेवल का कोर्स हो, ऑफ कोर्स अंडरग्रेड तो रहेगा ही, बट चाहे जिस लेवल का कोर्स हो उस कोर्स के अंदर, ठीक है. देयर इज नो कंप्यूटर साइंस इनसाइड हियर, बट कंप्यूटर साइंस के अंदर के कोर्सेज हमेशा रहेंगे. बाहर देयर इज नो BSc or anything, you get a degree, but you have to choose your particular course. alright, तो इसमें भी ऐसे ही रहेगा. You have to select the university, you have to select the course, whatever you want to take. Now you sign up for it and your classes start. They'll give you a schedule and everything. It will be a very formal session and anyone can take it. Anyone, not just high schoolers, anyone can go for these courses. Sign up karo. You will get a bunch of students taking the same course. bunch से भी कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी hundreds मिल जाते हैं. whatever ideas you get after taking that course, और उसके बाहर भी उस field में जो ideas हैं, you put it down in the section, comment section you can call it, but it is not really a comment section. It is basically an interactive place. You put in, people will start talking about it. Now as they're taking the same course, क्या पढ़ रहा है? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियाज़ को कैसे बाहर ले जाएं. काफ़ी मिस कर दिया. मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी. क्या टाइम हो गया? 1:40 हो गया ऑलमोस्ट. Okay, so now if you want to take whatever you have thought beyond your four walls, you'll get those bunch of people, hundreds of people, जिनके साथ तुम लोग अपना वो आइडिया डिस्कस कर सकते हो. They will review it, they will talk about it, considering कि वो लोग सेम कोर्स ले रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस सेम है. ठीक है, कुछ भी कमेंट की कोई फ़ी नहीं है. एंड इट इज़ एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म दैट वेरी लेस पीपल सैडली नो अबाउट इन इंडिया. एक ये है, एक MITx है. edX एंड MITx आर दी मोस्ट पॉपुलर वंस. ये कोर्सेरा और उनके जैसे नहीं है कि एक इंसान पढ़ा के चला जा रहा है और उतना इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, खाली उसी इंसान से इंटरेक्शन हो रहा है. नहीं, वैसा नहीं है. इट इज़ लाइक अ क्लासरूम, अ वर्चुअल क्लासरूम. प्रॉपरली तुम्हें वो पढ़ाने का इन्वायरमेंट मिलेगा, कैसे बाहर पढ़ाया जाता है, सब कुछ. दे इनफैक्ट दे डू ऑल दोज एक्सपेरिमेंट्स टू, एक ही एक्सप्लेनेशन के लिए दे डू अ बंच ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू टेल यू. नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रेडिट बहुत कम फेमस है बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. माना कि इसमें हैं थोड़े बहुत कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, बट इफ़ यू जॉइन द राइट कम्युनिटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको बीट करके निकलता है रेडिट. ठीक है, आई हैव जॉइंड अ बंच ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्लब्स ऑन रेडिट, डाउनलोडेड, जॉइन देम. थ्रू आउट द वर्ल्ड यू विल डिस्कस वन टॉपिक. क्या डीप डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे, प्लस फैक्चुअल चीज़ें भी पता चलती हैं. इट्स लाइक अ न्यूज़ चैनल बट वेर यू कैन टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. One day I just put in one idea that I got, and I got 200 and just can you guys give me a second? जी अंकल, अच्छा ठीक है. Yeah, so I put in something in the morning and I got by the evening I got nearly 250 comments telling about it, talking about it, positive, negative, whatever it is. कभी कभी इट माइट एंटर द फील्ड ऑफ टॉक्सिसिटी, जो कि कभी कभी दिक्कत बन जाती है, बट मोस्टली इट इज़ फाइन. इफ़ यू नो हाउ टू इग्नोर टॉक्सिसिटी, इट इज़ परफेक्ट. बट अगर तुम्हारी मेंटल स्टेट पे दिक्कत चली जाती है, देन डोंट गो फॉर इट. ओके, सोशल मीडिया से उन लोगों को दूरी बनाई रहनी चाहिए जिनको दूसरों के कॉमेंट्स अफेक्ट करते हैं. सी, इन द फील्ड ऑफ साइंस देयर विल ऑलवेज बी पीपल फॉर यू एंड देयर विल ऑलवेज बी पीपल अगेंस्ट यू. व्हेन यू स्टार्ट विथ समथिंग, most of the multitude will be against you. ठीक है, and it is a sad reality. But once people start believing in your work, once one of your works get published and you start getting recognition, then people will think thrice before going against your work. Then mic बंद कर लो. Okay, then people will think thrice before going against your work. All right, समझा इतना? कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट्स, कोई प्लेटफॉर्म से कोई दिक्कत? नो दीदी. No? Okay.
परफेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं फिर. Using social media the right way. I think I haven't. Just let me check once if I have or not. I think I didn't. Okay, wait. I'll quickly add a slide because I wanted to talk about it. I'll add it before it. Just give me a second, okay? I won't take a lot of time. Okay. Can you guys see my screen? Yes, Didi. Okay. Yes. Now, before that, I want to discuss this. NASA offers student clubs that people don't know about, sadly. NASA offers student clubs not just for high schoolers but for undergrad students as well. Okay? I myself was a part of this NASA. I am still a part of this NASA club called Perseverance. For Perseverance, I don't know if you have heard about it. Mars rover mission Perseverance 2020 गया था मार्स के ऊपर NASA की तरफ से. So I'm a part of the student club. Now, I don't know why don't people know about it, but in India, it is a very unpopular opinion to join these clubs because it is sponsored by NASA and people want you to go into the direction of ISRO. But ISRO does not have any student clubs. Though for all the 9th graders or who are about to go in 9th grade, let me tell you about the Yuvika program of ISRO. Okay? ISRO offers a Yuvika program जिसमें कि it is a 1-week program. You will go to ISRO and you will first of all the selection rate is very low. Okay, I got to know about it in 10th grade and I regretted on the fact that I did not apply to it before. But you apply to it and I think this is the application time. Abhi applications khule honge. You apply to it, you'll go to ISRO for free. They'll give you a walk through the entire ISRO building and they will explain you different stuff. You'll get a stay at ISRO or somewhere around ISRO and it is an amazing program that I did not know about in my 9th grade. So all those in 9th grade, go search for that program, sign up into it because it will help you guys a lot. Now let me come back to NASA. NASA does not have any such thing in which the acceptance rate is low or anything is low. It is open for everyone, but if you want to qualify for a higher chair in the student universe, in the student council there, then you need to work hard because there the acceptance rate gets low. But if you want to start with it, it is completely free. Every time NASA starts with a particular project, it launches a student project parallelly. उनको student research भी चाहिए, उनको evolving stars भी चाहिए. Go through this website, interact with it. STEM engagement के लिए इससे अच्छा platform कोई नहीं है. It is not professors discussing it. It is very, very experienced scientists discussing about a particular thing. Alright, and very less people know about it. Go flex about it, make it famous because it is very important. Considering इससे अच्छी community नहीं कहीं मिलेगी और resume में भी future में लगा सकते हो. They even start paying you if you know that there are 2 Bihar boys who were a part of this program this year itself. Last year in December. A star was named after these 2 guys because of their contribution in this one mission that they were a part of. Artemis 2024 में जाने वाला है. They made a very big contribution in that. From Bihar, Indian people, a star is named after them now. बहुत famous हुआ था but फिर ठप हो गया because generally people are not entertained by science news, but this is something that should have propagated more so that people would have known more about it. Go sign up into it. Don't think of yourself as small. ऐसे ही लोग join करते हैं जो कि generally इन सब चीज़ों में interested होते हैं. Okay,
and this is not just confined to the high schoolers. If you are in undergrad and if you want to go ahead and do more stuff, there's a undergrad K16 thing as well. So K12 means till 12th grade, K16 matlab 12 plus 4 16, so that is for undergrad. In fact, when you start with the undergrad the first year, whenever, I think India has now signed up for it too, you get an internship from NASA. You can apply for it. If you get selected, you go to NASA for I think 2 months program it is. You are there at NASA working along with the scientists for free, living in the colony that NASA provides to all its employees. Okay, it is amazing. Okay, so but you need to start building up your steps to it right now. Okay, now coming to using social media the right way. Before that, I also want to talk about SpaceX. SpaceX conducts these programs, but I think if you apply for it, you need to go to America, considering कि SpaceX के हमेशा robotics से लेना देना या कुछ ना कुछ manually रहेगा. But if you apply for it and if you get in, considering all the essays that they ask and the acceptance rate is very, very low, but there's no harm in trying. If you apply and if you get in, what's more better than that? The stay is free and everything is free, and you have to stay there for I think 3 to 4 months for SpaceX. जब तक उनका वो मिशन लॉन्च नहीं हो जाता, वो तब जनरली ये सब लाते हैं स्टूडेंट मिशन जब स्टूडेंट ये लॉन्च की डेट करीब आ रही होती है. ओके, सो कीप अ ट्रैक ऑफ दैट टू. नाउ यूजिंग सोशल मीडिया द राइट वे. ट्विटर का नाम सबने सुना है. ट्विटर टॉक्सिक, पक्की बात है, टॉक्सिक है, बट इसमें कम्युनिटी सबसे जल्दी बिल्ड होती हैं. इफ़ योर मेन मोटिव इज़ टू एक्सप्लोर स्टफ, यू आर गोना स्टे टू इट. ट्विटर पे साइन अप करो, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी, डोंट गो इनटू ऑल द शिट that there is. But other than that, if you join one astronomy club, there are millions of people there who can follow up with their idea, जो कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादा होता है. ऑलराइट, नाउ इन दिस दिक्कत ये होती है कि दिस इज़ नॉट जस्ट द पीपल ऑफ योर एज ग्रुप टॉकिंग. This is the people of a lower age than you sometimes, of a higher age than you sometimes. And when people are old, they can't really resonate with the idea of the youth, because partially they have the ego that उनके आइडिया से कैसे कुछ अलग हो सकता है. लाइक जैसे हमारे पेरेंट्स कभी कभी कहते हैं ना, उन दिनों की बात है, आजकल तो कुछ हो ही नहीं रहा है. सो यू आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद दैट हेल्दी एनवायरनमेंट that it has to offer. For a broader use, it is good. If you want to get a broader perspective from a broader age group, it is fine. But because हम लोग ब्रॉडर एज ग्रुप में जाते हैं तो टॉक्सिसिटी भी आ जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों की मेंटल स्टेटमेंट जनरली ट्विटर से बहुत दिक्कत होती है. सो फॉर दैट देयर इज दिस थिंग कॉल्ड डिस्कॉर्ड भी वैसा ही है ट्विटर जैसा. बट इफ़ यू वांट स्किप थ्रू ऑल द टॉक्सिसिटी, गो फॉर दिस टम्बलर is only for teenagers. No one above the age of 19 can join Tumblr. And if you're a part of Tumblr, you share your idea and you just interact with the teenagers. Now, because it is for teenagers, you have to maintain distance from the teenage dream, because generally people go towards that direction. If you are capable enough to make that distance, then nothing can beat Tumblr for discussing your ideas. Alright, but it is of course just for discussions, very unofficial discussions, but just from your age group. So whatever people at different schools from different parts of the countries are studying about a particular topic, वो लोग वहाँ शेयर करेंगे, तुम लोग अपनी बातें शेयर करोगे, वो लोग फॉलो अप करेंगे. ओके, सो दैट्स टम्बलर. नाउ कमिंग बैक टू डिस्कॉर्ड में यू जॉइन अ कम्युनिटी. ठीक है, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी, जो कि डिफरेंट एस्ट्रो बिस्किट वी कॉल इट. I don't know, it's a funny name, but it is that. It is what it is. बहुत सारे क्लब्स हैं जहाँ पे तुम लोग कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो. You can just read through a chat. You don't even have to share your head there, because जो भी तुम लोग सोच रहे हो, there are always people following up to it. There are always on all these famous communities thousands of people. और इसमें टॉक्सिसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू ट्विटर, क्योंकि जब तक तुम लोग वो कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करोगे तब तक डिस्कॉर्ड में उन सब चीज़ों से दूर रखेगा. ठीक है, सो फर्स्ट वन बीइंग टम्बलर पे जा सकते हो. इट विल बी हाईली इंटरैक्टिव फॉर यू गाइज. इफ़ नॉट डिस्कॉर्ड, एंड इफ़ नॉट देन यू गो फॉर ट्विटर. ऑलराइट, सो यूजिंग सोशल मीडिया द राइट वे. That's it. If you have any questions, you can ask. We still have 10 minutes to spare, which I did not think we will have.
Any questions? Yes, Anvika. Can you just suggest some books related to astronomy? Okay, yeah. So one is, as I said, A Brief History of Time. Actually, I have a bunch there. If you will just give me some time, I'll just go grab them. Okay. हाँ Dundun, anything that you want to ask? कुछ पूछना है? नहीं? Can you just tell me that book's name that you just Oh yeah, told? that is here. Wait, give me a second. All my books are very scattered, so I'm very sorry for that. I couldn't grab all of them, but I brought in some. So this is God Created the Integers, that maths book. It is by Stephen Hawking himself, and there's a follow-up book for that, equally thick, but it is a follow-up if you want to read through it. It is On the Shoulders of Giants, again by Stephen Hawking. Thank you. Yeah, it has all the mathematics. Okay, this is for mathematics, very, very thick. I couldn't grab all of them, but I grabbed some. So one is this book, The Evolving Universe and the Origin of Life. A very famous book and a very nice book, contains the gist of everything, but not very new. तो जो नई theories आई हैं वो इसमें नहीं discussed है, but a very nice book. You can go for it. In fact, the summer program that I attended in Chicago, this was the book that was suggested. So you can go for it. Now this is, of course, Stephen Hawking, The Theory of Everything. The theory that he gave, the main theory of Stephen Hawking, thin book, just contains one theory, but it is a theory of everything. Legit theory of everything. So he starts with the classical physics, classical astrophysics, and he goes against the classical astrophysics as well. तो काफ़ी controversial थी, काफ़ी cases हुए Stephen Hawking के against, but just an amazing book. I don't know how did I get this book here. Okay, this was the book that I was talking about. Brief answers to the big question. The first question I'll show you. I'll read out to you the questions discussed here. Yeah, is there a God? That was the first question. Okay, and likewise there are many such controversial questions that he discusses. It is an amazing book. Go for it. Is there a God? How did it all begin? Can we predict the future? Will artificial intelligence outsmart us ever? So this is one amazing book that you guys can go for. I'm a big fan of Neil deGrasse Tyson, an amazing astrophysicist. Books नहीं पढ़नी है. There's a YouTube channel called Star Talk. उस पे sign up कर सकते हो. He discusses all this amazing stuff on Star Talk, along with Chuck, who is his co-host, who is a comedian. So there's also it's not completely monotonous. You can go for it. This is an amazing book. Go read it. It is called Astrophysics for People in a Hurry. Gist of everything, as the name suggests, astrophysics for people in a hurry. Now, I don't know if you know about Michio Kaku or not. He is a Chinese astrophysicist. He wrote this book, The Future of Humanity. He is a famous scientist, of course, but he is not very reliable according to the American scientists. So if you watch Star Talk and if you see one interview, it is of Michio Kaku and of Neil deGrasse Tyson. It is a very funny interview. वो इंटरव्यू भी नहीं था, मतलब वर्चुअल नहीं था, ऑन द स्पॉट था, तो उनको बुलाया गया था एंड देयर वाज अ होल ऑडियंस एंड एवरीथिंग. This book he wrote, it is very controversial. It got controversial in America. ठीक है.
सो जब ये आई थी विच वॉज आई गेस 2015 आई गेस. हाँ नंदन कोई क्वेश्चन? ये बुक हम लोग भी पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हो. ठीक है. तो you guys can sign up for it. I'm saying can read it now. This Carl Sagan के नाम सुना है? वेरी वेरी फेमस साइंटिस्ट. इन्होंने लोग एक बुक लिखी थी कॉस्मोस. नहीं सुना? सुन लो. ठीक है. कार्ल सेगन ने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी कॉस्मोस. इट डज नॉट हैव एवरीथिंग. क्वांटम थियरी नहीं डिस्कस की गई है बट क्लासिकल थियरी दैट मीन्स द बिगर थिंग्स ऑफ आवर कॉस्मोस, इसमें वो उन सब चीज़ों का डिस्कशन है. फॉर एग्जाम्पल वन वॉइस इन द कॉस्मिक फ्यूग. दिस इज़ एन अमेजिंग बुक. इट ब्लोज योर माइंड व्हेन यू रीड इट बट द थिंग विद इट इज़ 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए एक टॉपिक को, क्योंकि द वे ही टॉक्स अबाउट इट ही डज नॉट go into a very intellectual language, but yeah, it is good. You can go for it. Now there's this series called George Unlocking Key to the Universe. Stephen Hawking and Lucy Hawking. Lucy Hawking is the daughter of Stephen Hawking, wrote it together. हाँ जी. टाइम 1:58 हो गया. हाँ ठीक है. 2:10 तक हो सकता है. ठीक है. ठीक है. सो देयर इज दिस बुक अनलॉकिंग द यूनिवर्स. ये उसी का एक पार्ट था. फॉलो अप बुक आई थी बट इट इज़ नॉट द सीरीज़. मतलब जॉर्ज और जो भी इसकी स्टोरी है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है. बट उसमें जितने भी फैक्ट्स डिस्कस किए, इट इज़ अ साइंस फिक्शन सीरीज़. पढ़ो, मस्त है. थोड़ी सी चाइल्डिश लगेगी बट अच्छी है. सो दिस हैज़ ऑल दी फैक्ट्स अबाउट इट, ऑल द थिंग्स डिस्कस्ड इन इट. सब कुछ है इसमें. मतलब सोलार सिस्टम से लेके जब जॉर्ज ब्लैक होल के अंदर गया वगैरह वगैरह सब कुछ डिस्कस्ड है. आई थिंक इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ बुक इनिशियली when you want to start exploring the cosmos, go for it. The first one it should be. Okay, when you have some knowledge about astrophysics, मेरी गंदी हो गई बुक, काफ़ी दिनों से नहीं पढ़ी है. There's this book called Letter from an Astrophysicist by Neil deGrasse Tyson again. So Letters from an Astrophysicist is a very professional book, I must say. If you don't know the basic terms, the basic concepts, तब ये नहीं समझ में आएगी. But if you have read around 10 to 15 books and you know the basic terms and you know what Neil deGrasse Tyson generally talks about, if you watch Star Talk, it is a podcast thing. If you watch Star Talk on YouTube, podcast मतलब ज़रूरी नहीं कि तुम लोग Spotify से सुनो. Generally YouTube पे ज़्यादा सही रहता है. So if you watch it and if you watch it continuously for a month, every day one podcast event, then तुम लोग को नील deGrasse Tyson की बातें समझ में आने लगेंगी. If you don't know how he talks, what he talks, then this book is futile to have. Don't buy it in your initial days, but buy it sometime. Alright, now there's this very famous astrophysicist who is still alive and he is a professor at MIT, Jim Baggett. Jim Baggett. हाँ जी. मैं खाना खाने चला जाऊँ? हाँ खाना खा लो. मैं लीव हो रहा. ठीक. So there's this very famous astrophysicist who is a professor right now at MIT called Jim Baggett. He wrote these 2 books. The first book that you need to read before understanding this is Quantum Space. अगर Quantum Space पढ़ी है तो मतलब तुम लोगों को क्वांटम थ्योरी समझ में आ रही है. क्वांटम थ्योरी मतलब तुम लोग एक पार्टिकल पे ही नहीं सीमित रहोगे, डिफरेंट पार्टिकल्स पे चले जाओगे. फोटॉन से जाओगे क्वार्क्स पे, क्वार्क्स से ग्लूऑन्स पे, एंटी पार्टिकल पे. तो वो सारी टर्म्स जब इसमें डिस्कस होंगे, इट इज़ क्वाइट थिक, बट व्हेन यू आर डन रीडिंग इट नाइसली then you will get this. Now this is his theory about mass that he gave. About anti-mass, मतलब mass, you know, it always remains positive. हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. कभी किसी का -500 ग्राम तो नहीं सुना है ना. It talks about -500 grams. So वो तभी समझ में आएगा जब ये पढ़ ली. Alright. So these are the few books that I suggested today. I'll take out more tomorrow if you guys want to. But I think this will give you a gist of quantum, about classical, about big stuff, about small stuff, about different scientific innovations that we have done. Tomorrow we are going to talk about humanity and science. So whatever we have done so far, not just India, but different countries, whatever we have done so far, and then we'll go up to how can you pursue this subject in the future. क्या इंडिया में कोई स्कोप है
खाली प्योर साइंसेस यानी कि बीएससी या बीटेक के अलावा कुछ है यहाँ पे करने के लिए कि नहीं है? अगर है तो कहाँ है? अगर नहीं है तो बाहर कैसे जाना है? बाहर जाना है, पैसे नहीं है तो फाइनेंशियल एड कैसे करनी है? कब जाना चाहिए? क्या क्या कर सकते हैं? सो दैट ऑल इज़ फॉर टुमारो. टुडे, डिड यू गाइज लाइक इट? Yes, we did. You did? Was it worth it? Yes. Yes. So, Was. huh? Somebody said something. No? Okay. So, I have never taken a workshop before. This was the first time I did all the presentations and everything. Though I talk about whenever I'm surrounded by people, whoever I'm surrounded by, know that I just talk about this stuff in general. So, yeah, this was the first time I made it formal. Have you guys attended any workshop before? Any subject, any field? कोई attend किया है? नहीं attend किया? Okay, fine. So this was the first time for you guys as well. Hopefully all the workshops are done like this only, because even I haven't ever attended a workshop. Though considering I'm an author, so I so much want to do a writing workshop. क्योंकि लोगों को लिखना आता है, लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है. कुछ लोगों को लिखना नहीं आता बट उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उनको लिखने में हेल्प करना, और जिनको लिखना आता है उनको पब्लिकेशन में हेल्प करना फ्री में. सो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ राइटिंग वर्कशॉप सम टाइम, बट आई एम नॉट श्योर. डू यू गाइज वांट टू डू इट? आर यू गाइज इंटरेस्टेड इन इट समडे? Yes, Didi. Yes, pakka. Okay, but I have my boards. Though if I do it, I'll do it somewhere in maybe a Saturday or a Sunday. Only one day. I'll see. Though I'll send you guys a feedback form. अगर फीडबैक फॉर्म नहीं फिल करना है तो फीडबैक ज़रूर दे देना. बट इट इज़ अ वेरी सिंपल फीडबैक फॉर्म. गूगल फॉर्म है, छोटा सा दे देना. रेटिंग भी होगी, थोड़ी सी टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा 5 मिनट का है, बट प्लीज़ दे देना, क्योंकि आगे भी अगर कुछ ऐसा करना है. आई सेंड इट टू दिस स्कूल एज वेल, Netaji Subhash Chandra Bose, the army school of Maharashtra that joined us together today. So I'll send that to them too. Alright, so if you guys don't have any questions, then you can leave the meeting. If you want to say something, then you can say. Otherwise, go have your food. Let's meet tomorrow. Nothing? See, I have a question. हाँ बता. When will your Shiv painted her own universe book? When will it release? It will release in February or March, क्योंकि वो मेरा complete है, मेरी book वो complete है. But उसकी final editing हो रही है. So if I can do the writing workshop, whenever I do it, I will somewhere bring it up. Okay? Okay, Didi. Okay. Any other questions? Any other thing that you guys want to discuss? No? Okay. If not, you guys can leave the meeting. You can submit the feedback form by tomorrow, anytime you're free. Okay? Bye bye. See you. Bye, Didi. Bye bye. Bye, Didi. Bye bye.